A very good morning to all of you joining us on this webinar. आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो हम सबको ज्वाइन कर रहे हैं इस वेबिनार पर. On behalf of CPGG and Directorate of Economics and Statistics, Department of Planning, Government of Uttarakhand, I welcome all our guest speakers and all the participants to this webinar. आप सब लोगों का जो हमारे साथ यहाँ पे गेस्ट एंड स्पीकर्स एंड पार्टिसिपेंट्स, आप सब लोगों का वेलकम है. मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए. आपके स्क्रीन पे लेफ्ट में एकदम सबसे नीचे देयर इज अ आइकन ऑफ माइक्रोफोन. काइंडली म्यूट योर माइक्रोफोन्स and also switch off your videos. आप प्लीज अपने माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए एंड वीडियो स्विच ऑफ कर दीजिए. जो भी प्रेजेंटर होगा उनके लिए बहुत दिक्कत होगी ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन इफ देयर इज एनी अदर वॉइस कमिंग. अगर आपका माइक्रोफोन म्यूट नहीं है तो बहुत दिक्कत होगी प्रेजेंटर को. तो प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए. एंड अच्छे बैंडविड्थ के लिए कि आपका इंटरनेट अच्छा चले तो अपना वीडियो भी ऑफ कर दीजिए. थैंक यू. As you all are aware that today is 29th of June, the National Statistics Day. It is observed as the National Statistics Day. Thus, the theme for our webinar is Role of Statistics in Achieving Good Health and Gender Equality. We have a panel of esteemed speakers who will be leading us into today's deliberations. I would take this opportunity to introduce our guest. This webinar will be chaired by Major Yogendra Yadav, Additional Secretary Planning. We are waiting for Major Saab, so he will probably join us during the webinar and he would chair the all the proceedings. We also have an introduction by Dr. Manoj Pant, the ACEO of CPGG, the Center for Public Policy and Good Governance. Our other panel of speakers include Dr. Ravender Singh, Senior Advisor, Research and Evaluation, EHI, Dr. Manish Joshi, Senior Public Health Advisor, EHI, Ms. Gitanjali Sharma Goel, Deputy Director, 20-point program, Government of Uttarakhand, followed by our experts on gender, Ms. Ranjani K. Murthy, who is a researcher and consultant, Gender and Development, and Dr. Nilangi Sardesh Pandey, project anchor, Sahaj. We also have in our midst Director Sushil Kumar, who is the Director of Directorate of Economics and Statistics. Hope we all are on board on this. मुझे लगता है हम सब लोग आ गए हैं वेबिनार में और अब हम वेबिनार की प्रोसीडिंग्स शुरू करेंगे. My name is Sharon Jacob. मेरा नाम Sharon Mary Jacob है and मैं Center for Public Policy and Good Governance में ट्रेनिंग, कम्युनिकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रही हूँ. I will be moderating the session here, the whole webinar for the next 2 hours or so. I request all your support and cooperation. Before we commence the actual proceedings, please allow me to share the standard housekeeping announcement for speakers and participants. इससे पहले कि हम actual proceedings की तरफ जाए, अपना webinar शुरू करें, मैं कुछ मुख्य बिंदु आप तक रखना चाहूंगी जो आप सबको, हम speakers और participants सबको ध्यान में रखने चाहिए आने वाले इन 2 घंटों में. तो I would request everybody that you may kindly keep your microphone muted and your video switched off. Please अपना microphone mute कर दीजिएगा and video भी switch off कर दीजिएगा क्योंकि ये जो speaker और जो हमारे panelist हैं उनके लिए थोड़ा disturbing हो सकता है अगर कोई आवाज या कुछ video चले तो. Any comments and questions you have may be sent through the chat option and we will take it up towards the end of the webinar during the question and answer session that we have.
kindly mention the name of the panelist that you are posing your questions or comments to. आप कि आपका कोई भी अगर सवाल है या आपको कोई टिप्पणी देनी है तो प्लीज चैट का ऑप्शन है आप सबके स्क्रीन पे ऑन द राइट हैंड साइड, तो उसको क्लिक करके आप अपने सवाल या आपको जो भी कहना है उसको टाइप कर दीजिएगा। एंड जब वेबिनार खत्म हो रहा होगा, एंड में क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के दौरान हम कुछ सवाल उठाएंगे अपने स्पीकर्स के लिए। एंड जब आप क्वेश्चन लिखेंगे, सवाल लिखेंगे, तो स्पीकर या पैनलिस्ट का नाम जरूर लिखिएगा जिनको आप सवाल पूछ रहे हैं। And speakers are also requested to abide by their time slot for their particular session. Kindly bear with us for any technical glitches and we will try to resolve any glitches at the earliest. कुछ भी अगर technical issue होता है तो हम कोशिश करेंगे पूरी कि वो जल्दी से जल्दी solve हो जाए। प्लीज आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए सब लोग। So to begin with, I would like to invite Dr. Manoj Kumar Pant, who is the additional Chief Executive Officer, the ACEO of Center for Public Policy and Good Governance. Dr. Pant has been working with the government of Uttarakhand for the past 28 years, and he has worked in different capacities with different government departments in his career, spanning close to 3 decades. Currently, he is serving as the Joint Director, Director of Economics and Statistics, DES, and as additional CEO of CPGG, Department of Planning in Uttarakhand. May I invite you, sir, to please introduce the theme to us for this webinar. So you can share your screen as well. Yeah. Thank you, sir. Good morning to all of you. सभी लोगों को नमस्कार और सभी लोगों को आज इस सांख्यिकी दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसकी बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम गत कई वर्षों से सांख्यिकी दिवस को आज के दिन 29 जून को मनाते हैं। प्रोफेसर पीसी मलानविस जो किसी जिनको एज ए रिनाउंड स्टैटिस्टिशियन इस कंट्री के और दुनिया के भी रिनाउंड स्टैटिस्टिशियन रहे हैं, उनकी मनाया जाता है। 29 जून 1893 को डॉक्टर पीसी मलानविस जी का जन्म हुआ था और वो एक बड़े रिनाउंड स्टैटिस्टिशियन रहे हैं। उसके साथ ही साथ वो एक प्लानर के रूप में भी जाने जाते हैं। आप लोग सभी जानते हैं जो सेकंड 5 ईयर प्लान हमारा बना था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनके जो प्लानिंग कमीशन उस वक्त गठित किया गया था, जो प्लान जब बनते थे तो उसके वो मेनली मेंबर हुआ करते थे और उनके एक एडवाइजर के रूप में भी उन्होंने काम किया था। डॉक्टर पीसी मलानविस के बारे में जस्ट हम लोग सभी जानते हैं, जिलों से हम लोग लगातार हर साल डिस्ट्रिक्ट में ये 29 जून को मनाया जाता है। वो एक बड़े ही रिनाउंड स्टैटिस्टिशियन रहे जैसा मैंने बताया, लेकिन बेसिकली वो फिजिक्स के स्टूडेंट हुआ करते थे। उन्होंने फिजिक्स जो है पढ़ी थी और फिजिक्स पढ़ने के बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से, जो बड़ा फेमस कॉलेज वहाँ का रहा है कलकत्ता का, उसमें उन्होंने फिजिक्स पढ़ी थी। और उनके साथ ही साथ उनको जो जूनियर के रूप में मेघनाथ साहा जैसे रिनाउंड साइंटिस्ट, सुभाष चंद्र बोस भी उनके जूनियर उस दौरान रहे हैं। तो वो दौर ऐसा था जब बड़े बड़े रिनाउंड हमारे साइंटिस्ट निकल के आए थे, बड़े निकल के आए थे और ये इस तरीके का
लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट जस्ट अभी गई है यहाँ से, मैं दूसरे से कम्युनिकेट कर लिया मैंने अपने आप को। तो प्रोफेसर पीसी मलानविस का जैसा मैंने बताया कि वो फिजिक्स के स्टूडेंट थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को से उनको एक प्रकार से प्यार हो गया, और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स पे स्पेशली जो एंथ्रोपोलॉजी है, जो मानव विज्ञान है, उसकी संरचना को लेकर के स्टैटिस्टिक्स में उनका इंटरेस्ट जो डेवलप हुआ, और उन्होंने साइंस को ध्यान में रखते हुए पूरे स्टैटिस्टिक्स को डेवलप पे विचार करना शुरू किया। तो बाद में जब वो वैसे वो ब्रिटेन में 1942 में एक ओबी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर करके एक होता है, तो उसमें वो उसमें सर्विस किया करते थे, और फिर बाद में वो हिंदुस्तान लौटे, तो उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे, और साथ ही साथ उन्होंने उसी कॉलेज में एक स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी खोली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस फिजिक्स के अंदर। तो डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स के अंदर एक लेबोरेटरी खोली गई जिसमें स्टैटिस्टिक्स की चर्चाएं हुआ करती थी, और जस्ट ये जानते थे कि आप सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है जहाँ पे मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाता है, 2+2=4, हम सभी जानते हैं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम चांसेस, प्रोबेबिलिटी और हम इस तरीके की चीज़ें देखते हैं एस्टिमेट करने का। पूरे सेंसस के अलावा हम छोटे से सैंपल से किस तरीके से पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एस्टिमेट कर रहे हैं, ये सारी बातें किसी मलानविस साहब ने जो है वो अपनी सैंपल लार्ज सैंपल थ्योरी, लार्ज सैंपल जो लार्ज स्केल सैंपल सर्वे जो होता था वो उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। आप जो जानते हैं इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट जो बना है वो उन्हीं की देन है। 28 अप्रैल 1932 को उन्होंने एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर ये सोसाइटी के तहत इसको गठित किया था, और उसी में फिर ये आगे चलते रहे। तो कई उनका स्टैटिस्टिक्स में जो है बड़ा ज़बरदस्त रोल रहा है। मलानविस डिस्टेंस, हम लोग का जो स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट है हम सब ने उसको पढ़ा है, तो वो उनकी एक बड़ी देन रही है। और जैसा मैंने बताया, अगर हम डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, क्योंकि आज हम जिस दौर में हैं हम लोग कोर स्टैटिस्टिक्स से कहीं ज़्यादा ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स और डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, तो हम लोग अगर हम देखते हैं तो प्रोफेसर पीसी मलानविस का, जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तो उस वक्त उनके दौर में वो एक एडवाइजर के रूप में वहाँ पे थे, तो उन्होंने इस पूरे प्लानिंग सिस्टम को एक इकोनॉमिक मॉडल नया एक वहाँ पे दिया था, तो वो बड़े फेमस रहे। उस दौरान उनका मॉडल बड़ा पॉपुलर रहा, वो मॉडल भी चला है। साथ ही साथ इस वक्त मैं उनका भी नाम आज याद दिलाना चाहूँगा, जो उत्तराखंड से ही थे, मिस्टर पीताम्बर पंत। लोग उनके बारे में कम जानते हैं। पीताम्बर पंत जो हैं वो भी, उनको भी हमें आज याद करना चाहिए, हालांकि उनकी आज जन्मतिथि नहीं है, परंतु क्योंकि जब पीसी मलानविस जी को हम याद करते हैं तो पीताम्बर पंत जो हैं वो भी पंडित नेहरू के सेक्रेटरी हुआ करते थे, और उन्होंने स्टैटिस्टिक्स सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए पीसी मलानविस को, आईएसआई को और सीएसओ की जो शुरुआत हुई थी, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने देखा है, वो प्रोफेसर पंत जो मिस्टर पीताम्बर पंत का उसमें बड़ा रोल रहा है। और पीताम्बर पंत साहब ने जो है वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट को जो है मैट्रिक सिस्टम में डेवलप करने का योगदान भी उन्हीं को जाता है। तो आज हम उनको भी याद करते हैं, प्रोफेसर मिस्टर पीताम्बर पंत जी को। तो जैसा बताया गया, तो आज हम सभी आज जो चर्चाएं होंगी, जैसा शरण ने बताया, हम लोग आज SDG 3, हम सभी जानते हैं कि इस वक्त सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर चर्चाएं पूरी दुनिया में चल रही हैं। हालांकि कोविड के कारण इस वक्त ये टॉपिक थोड़ा डाउन हो गया, लेकिन आज जो टॉपिक है वो SDG 3 और SDG 5, ये आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना पहले हुआ करता था। SDG 3 की बात अगर मैं कहता हूँ तो हेल्थ स्टैटिस्टिक्स की बात हम करते हैं, हेल्थ इश्यूज जो आज कोविड के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट इशू हमें नजर आते हैं, तो उसको हमें देखने की आवश्यकता है। तो साथ ही साथ हम जेंडर पे आज बात करेंगे कि जेंडर स्टैटिस्टिक्स में किस तरीके से हमें क्या क्या चैलेंजेज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ऐसी हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में क्या चैलेंजेज हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो हम SDGs सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, आपने देखा है पिछले सालों में हम लोगों ने SDGs के वर्कशॉप किए हैं, सेमिनार किए हैं, सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस और डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स के कोलैबोरेशन से ये काम हुए हैं। तो ये एक अच्छा मौका है जब हम DES और प्लानिंग दोनों मिलकर के इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और चूंकि प्लानिंग के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमारे DES के डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स के सारे अधिकारी जिलों में रहते हैं, तो वो एक प्रकार से स्टैटिस्टिक्स प्लस प्लानिंग
तो हमने बल्कि अपने स्टेट में जैसे CSO ने NSSO का एक है स्टैटिस्टिक्स फॉर डेवलपमेंट, हम स्टैटिस्टिक्स फॉर प्रॉस्पेरिटी का एक विजन रख के चलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो स्वाभाविक है अगर एक अच्छा स्टैटिस्टिक्स होगा तो निश्चित रूप से हम एक अच्छा प्लान कर पाएंगे, और एक अच्छा प्लान कर पाएंगे तो स्वाभाविक है एक अच्छा डेवलपमेंट होगा, एक अच्छा विकास होगा, और अच्छे विकास से ही एक अच्छी एक प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। तो स्टैटिस्टिक्स फॉर प्रॉस्पेरिटी इज द विजन ऑफ दिस, हमारा DES का एक विजन है, स्टैटिस्टिक्स प्रॉस्पेरिटी के लिए है। तो मैं समझता हूँ जनरली हम सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस 1 मिनट और या 2 मिनट और लूँगा। हम सभी जानते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हम बहुत ज़्यादा लोगों की जो है लीस्ट प्रायोरिटी रहता है, लेकिन साथ ही साथ वो उसकी हाई प्रायोरिटी भी होता है जब कोई इस तरीके का क्राइसिस आता है या जब कोई इस तरीके के प्लान बनाने होते हैं, तो उस वक्त अचानक ध्यान आता है वो डेटा लाओ, वो डेटा लाओ, ये डेटा लाओ। विदाउट डेटा इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिना डेटा के हम कोई इस तरीके की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। तो आज हमें इन्हीं सब विषयों पर चर्चा, हमारे पास एक्सपर्ट हैं, हमारे CSO के ADG साहब, रिटायर्ड ADG हमारे साथ हैं, हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट, हेल्थ सेक्टर के हैं, हमारे पास डॉक्टर दीपक भंडारी साहब हमारे साथ हैं, जिनका हेल्थ स्टैटिस्टिक्स में, हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम है, HI इंटरनेशनल के रूप में। हमारे पास जेंडर के एक्सपर्ट हैं, हमारी डिप्टी डायरेक्टर गीतांजलि ने जेंडर पे काफ़ी काम किया है, हम लोगों ने एक इंडेक्स डेवलप किया है, उस पर वो चर्चा करेंगी। तो हम तमाम डायरेक्टर साहब अपनी बातें यहाँ पर थोड़ा बहुत रखेंगे, और साथ ही साथ आज अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट से एडिशनल सेक्रेटरी साहब जो अभी प्रेजेंट में किसी एक कोई उनका, क्योंकि वो आयुक्त विकलांगजन भी हैं, उनका कोई एक सुनवाई लगी हुई है, उस सुनवाई के बाद वो हमें तुरंत ज्वाइन करेंगे, और उन्हें तब तक ये हमें कहा है कि आप लोग शुरू कराएं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से हम लोग आज एक ऐसी कंक्रीट कुछ बातें कर पाएंगे, स्पेशली SDG 3 स्टैटिस्टिक्स पे, हेल्थ स्टैटिस्टिक्स पे, और साथ ही साथ SDG 5 जेंडर स्टैटिस्टिक्स पे। तो ये 2 इशू हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इस पर ही हम लोग आज चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब आगे शरण को देता हूँ, शरण इसको आगे कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Pant. Thank you for introducing us to this webinar and about the importance of about the importance of statistics, especially in today's life. Now I would like to invite Sushil Kumar ji, who is the Directorate of Economics and Statistics, Department of Planning, Government of Uttarakhand, to please say a few words. Sushil Kumar ji. हेलो, आवाज सुनाई दे रही मेरी? जी सर, आ रही है। पीछे आप सबको बहुत साइकिल दिवस की बहुत शुभकामनाएं। जितने लोग उपस्थित हैं, जितने लोग उपस्थित हैं, सबको बहुत शुभकामनाएं। मेरे जिले के जितने अधिकारी, कर्मचारी जो भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे भी मनोज ने कहा कि ये प्रोफेसर महानवमिश के जन्म शती के हम शांगी दिवस को मनाते हैं, और ये हमारे एक रिजल्ट है हमारे शांगी जी, प्रोफेसर महानवमिश। 1893 में इनका जन्म हुआ था आज के दिन, और 28 जून 1972 में इनका देहांत हो गया था। जहाँ तक ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मनोज ने पूरा स्क्रीन को बता दी कि भाई कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था, फिर उन्होंने वहां से प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिसी बीएससी की, फिर कमिंग यूनिवर्सिटी पढ़ने गए, और फिर वापस आए तो प्रेसिडेंसी ऑफ कॉलेज में फिजिक्स का प्रोफेसर है। उसके बाद उन्होंने अपना सांख्यिकी में अपना इंटरेस्ट इनको जगह, इन्होंने 21वां ISI का गठन किया, और जो कि बाद में आपका ये इतना बड़ा जो हमारा आपका आई स्विंग जो आपका कलकत्ता में यहाँ से, इसके अलावा उन्होंने बहुत चीजें हमारे उसमें दी, क्रॉप कटिंग, सैंपल सर्वे, पायलट सर्वे, ऐसी चीज इन्होंने दी कि जिससे कहीं नहीं कि हमारी सांख्यिकी को बहुत महत्ता इससे मिली। इसमें जानते हैं कि सेकंड 5 ईयर प्लान इन्हीं के मॉडल पर तैयार था, और इसी बेस इनको 1964 में पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ। आज मैं सबको यही कहूंगा, ये सांख्यिकी दिवस में हम 2-3 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखें, क्योंकि डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, और डाटा अगर अच्छा होगा तो कहीं कि हमारी पॉलिसी और मैचिंग बहुत अच्छी होगी। और हम लोगों का जो काम फील्ड में, जितने मेरे अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं फील्ड के, इस सबकी जिम्मेदारी बनती है कि डाटा क्वालिटी बहुत महत्वपूर्ण है। डाटा क्वालिटी, टाइम समयबद्धता और गुणवत्ता तथा अपडेट, जो भी चीज हम करें उसे अपडेट
होना चाहिए। ये नहीं कि हम 4 साल 5 साल पुराना डाटा आज दे रहे हैं, तो कहने की इसकी महत्ता खत्म हो जाती है। तो डाटा की गुणवत्ता होगी, डाटा का अपडेशन हो गया, और उसका टाइम पीरियड है, एक समय सीमा उसकी होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। जैसे आज है कि आज का जो आपका ये वर्कशॉप है, इसमें बेसिकली SDG 3 और 5 हेल्थ और एंड जेंडर स्टडीज के बारे में आपको आज जानकारी देगी, जिसमें अच्छा है कि कुछ हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारे जेंडर पे हमारे डायरेक्टर गीतांजलि जी कुछ बताएंगे। तो कहीं नहीं कि आप लोग सबसे इससे बेनिफिट होंगे, और जो भी आपकी दिक्कतें भी दूर होंगी। मैं ज्यादा नहीं कहेंगे, सबको अपना शाह की देव से बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सुशील कुमार जी, जो आपने डेटा गुणवत्ता के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में हम सबको बताया। Now we will have our key speakers who will be leading us into different sessions. I would request all the speakers to please use a mix of Hindi and English for the benefit of our different participants who are with us, who are comfortable in one or the either language. And all the speakers, I'll be allowing you to share your screen. So you will be able to present your presentations through your screen itself. Please let me know if there is any issue with sharing the screen. Our very first speaker with us is Dr. Ravendra Singh. He is the Senior Advisor, Research and Evaluation, EHI. He has a PhD in statistics and is retired as Additional Director General, MOSPI. He has a very rich experience in managing various health and family welfare programs like child survival and safe motherhood. He had also worked on short or long-term basis for some UN and international agencies like UNDP, Food and Agriculture Organization, GIZ, World Bank, DFID, etc. It is my pleasure to invite Dr. Singh to please start his session. He will be talking to us on improving health statistics in Uttarakhand. Over to you, sir. Okay, good morning to you all of. Hello. Good morning, sir. Can you hear now? Yes, sir. Yes, you're very audible. Okay. 1 minute, I think, video to come. Actually, first of all, let me congratulate you all for National Statistics Day. As already mentioned by Dr. Pant and Mr. Sushil Kumar, it's honored in the birthday of Professor P.C. Mahalanobis, who is a pioneer and actually father of official statistics in India. Many things has been said about it. I will not repeat that. Today, the national function is going on right now in the New Delhi, and it is also web-based, and webinar is going on. Many renowned speakers are talking about his contribution. But today's topic, actually, I am going to speak about is about the improving health statistics. It is basically in the context of SDG 3, which is basically improving health of the people, where if you have a good statistics, you can able to monitor the SDG, all the SDG, including SDG 3, at a very good basis, and we can able to improve upon system. So my topic will be how to improve health statistics, especially in the context of Uttarakhand. Actually, I also may like to mention that recently EHI has been actually undertaking the work of compendium for health statistics. While working with that, I found that a lot of statistics which is required for the improving health status in the Uttarakhand is missing. I mean to say it is very deficient. Basically, when talk about the deficiency at the district level, maybe many information is available at the state level, but the information available at the district level is very poor. So in this context, I am going to make a presentation.
where things will be mentioned about how we can able to do the things which can improve the statistical system in general, but health statistics in particular, basically. So let me share my presentation then. Basically, I will talk about the improving health statistics in Uttarakhand, and my presentations outlined of we are talking about the sources of health statistics, and which are population census, sample surveys, surveillance, registration, and administrative data. Then I will talk about the data triangulation, how one can triangulate the data to improve the analysis and take evidence-based policy decisions. And I just talk about the data gaps in health statistics, and I will also give some suggestions for improvement. As I mentioned, that sources of health data collection, basically data is collected through population census, sample surveys, surveillance, registration, and administrative data. They are the various sources on which we are collecting a lot of health data. We all know that population census is conducted once in a 10 year, and it has very good advantage because you can have intensive study. We can say, we can talk about data from small areas. We get a very reliable data, and there will be suitable choices. We can talk about situation of different population, especially when the population are very heterogeneous. And we all know that population census data is also used for conducting various surveys. Basically, we can able to take a frame from the population census and use it for various surveys. But there are certain limitations of the population census also. It's a very costly affair. Actually, we cannot go to take up any census without having a large cost. And it also, when there is a population census to be done, it is time consuming. And there are also possibility of errors. Errors basically are in the response, non-response is there, measurement errors, sometimes lack of precision will be there about the definitions, and also personal bias of investigators. Because if you are going for the large scale survey, population census or any census, there are many investigators are involved, and because the investigator will have their own personal bias, so that will affect your data quality. Sorry, we'll go back to previous slide. Okay, we'll talk about the sample survey. We know that sample survey is a part of the population which is approached for taking information, and which can be later on weighted or expanded to get the information about references about the whole population. They had advantage compared to sample survey. Sample survey has advantage compared to censuses. We all know that it is the reduced cost compared to census. Naturally, since we are taking a part of population, so time consuming and resources needing is also lesser. And here also survey will have respondent burden, lesser respondent burden in the sense that that the data is needed from the small population, and we can able to get the results very quickly. But disadvantage of the sample survey is there that we cannot take the information about a specific group, subpopulation, and a small geographic area. We cannot evaluate the data because it will not be useful. Reliability will be problem. Estimates will be sampling errors, and they will be very difficult to control the sampling errors, and communicating the accuracy of the sample is also doubtful. So there are certain disadvantages to sample survey also.
Some of the sample surveys actually are conducted in the health side. We all know that they are National Family Health Survey. Latest is in NFHS 4 2015-16 and NFHS 5 is presently undergoing. We had actually previously done the annual health surveys in 3 years, 2010 to 2012-13. And we have a district level health and facility survey done in the past. Besides that, we NSSO also take up the surveys on health, morbidity and expenditure, health expenditure on the basically from the health perspective. The NSSO has taken a very old survey in 1953, 1954 also, and latest is 1718, which was released in November 2019. The data is also collected in health side on the basis of surveillance. Surveillance is basically a systematic process of collection, transmission, analysis, and feedback of the public health data for decision making. Presently, as we know that pandemic corona is going on and a lot of surveillance data is being collected. An efficient surveillance system is crucial factor in identifying, monitoring, and tackling outbreak of infectious disease. There are 3 types of surveillance: sentinel surveillance, accelerated disease control, that is national active, and national passive. Active surveillance could be hospital based or community based depending on the requirement of the disease or epidemics, what could be the situation. This is actually dynamic vision of surveillance, where we collect and transmit data, then analyze the data, then provide the feedback information, and then on that basis we take a decision. So this is a dynamic process we have to take up when any surveillance data is used. The another good information of getting information about the health statistics is basically through registry. A registry is a collection of information about individuals, usually focused around a specific diagnosis or disease or condition. Some registries are available in India like cancer registry, HIV/AIDS registry, and we have also in each health facility we have a patient register which also provide a lot of information. In many developed countries, a number of registries are very high. That means there are many registers which is basically based on various diseases. We have India another registration system which is called the civil registration system, which is a unified process of continuous, permanent and compulsory recording of vital events, birth, date, stillbirth and their characteristics. We all know that data generated through CRS is, if it is complete and up to date, is essential for the socio-economic planning and evaluate the effectiveness of the social sector program, basically health programs. But despite this, that around 40 years of the act, we are not able to get full data from the CRS. Therefore, long back a decision has been taken to start a sample registration system in 1969-70, and through sample registration system we are annual basis we are getting information about the sex ratio, birth rate, death rate, infant mortality rate, stillbirth rate, etc. So registration is a very important aspect in the data health collection. The most important data sets is administrative data sets about the health statistics. Healthcare administrative data are generated at each and every encounter with the healthcare system. A patient coming to the health center or diagnostic center, admission to hospital, and even receipt of prescriptions or community dispensaries is also a part of administrative data. Administrative data are most commonly available, and it also been associated with errors of duplication. Basically, we are not getting full data. We get data which is very incomplete administrative data. And
Basically, this is a byproduct of the service delivered to the people, and therefore its quality and relevance is difficult to establish. As we know that in India, there is a big difference between the administrative data and data available through other approaches. That means if you go for the surveys and we get a findings, and we get findings from the administrative data, they are quite at variant. So we need to improve the administrative data quality so that we can able to get good information and we can get good responses on the analyzing the administrative data. Despite the deficiencies of administrative data, health research, lot of health research is based on administrative data and its availability of regional and national databases recently. In the area of data triangulation, basically triangulation means using more than one method to collect data on the same topic. As I mentioned about just now, that there are administrative data which is collected from our normal functioning of the system, and there are survey data. So there are two data sets which is getting information about the same set of activities. So what to do that? In that situation, we need to have a data triangulation to get a qualitative research and to increase the credibility and validity of results, so that we can able to get a good information and also to use it properly. We need to have a data triangulation. Therefore, data triangulation facilitates validity of data across various sources, and we can verify them coming from the different sources. Public health triangulation is a process for reviewing, synthesizing and interpreting data from multiple sources that wear the same questions to make public health decisions. Basically, because the data sets in the health sector are available from different sources, we need to have public health triangulation so to get a very good decision. It can also use to understand the, like we can able to use the understand the dynamics of HIV/AIDS transmission and measure the impact of public health programs, how the public health programs are benefiting the people and also reducing the any HIV/AIDS or any other disease. We can able to understand the dynamics of such process. There are number of parameters where information available from administrative data which can be triangulated data obtained from various surveys. As I have already mentioned that there are two data sets and we can able to get a good reference or good inference after triangulation of such data sets. Data gaps in health sector. As I mentioned that earlier that since I was involved in the preparation of the compendium for health statistics for Uttarakhand, I have seen that lot of data sets are missing at district level. It's a main reason is that the surveys data from the central government is only provide information at the state level, not at the district level. So lot of district level information is missing, and when the planning for district is done, which is not done on the basis of available data sets at the district level, but on the basis of available data sets at the state level. So many times the district's position may be different from the state as a whole. So district planning will not be a very good process. So in order to that, I just identify certain areas where I will give the gaps in data in respect to the health statistics. Gaps in measuring universal health coverage. There is no monitoring and evaluation framework in terms of inputs, activities and output to focus on achieving outcomes of improved population coverage, improved service delivery and cost, and sharing affordability of the care. Basically, we need to develop a monitoring and evaluation system wherein we can talk about inputs available for the health sector, activities conducted and output of that,
which can be correlated with the outcomes or impact of the various health programs, which is basically needed for universal health coverage. If you are needed to go for health for all, then naturally we need to have a very good monitoring and evaluation framework for the same. And for the monitoring and evaluation framework, we need a lot of data from different activities, different inputs, different outcomes and outputs and outcomes, and also the impact of the data, impact of the various programs. There is another area where actually data gaps have been noticed is population health coverage. Basically, we have a program going on and we get say 80 to 90% of the coverage, but we don't know what 10 to 20% coverage is missing, which is the people or which is the population which is not getting a benefit of that, or which is the population which is getting a, which is a group of population basically get a lesser benefit. So such activities are needed to understand what type of program benefit is going to what type of population, whether they are reaching to remote people or to particular age group or to a particular occupation or particular socio-economic group, or even for the diseases or programs, whether they are getting benefit to all the population or not. So data is needed to analyze such conditions. Basically same thing, we need to analyze the data, marginalized population, whether benefit of the population programs and investment has linked with the outcomes for these specific inputs and activities. Basically, lot of activities and inputs are being provided to marginal population, whether they are getting benefited or not. Data on cause of death, prevalence and incident rates for diseases not easily available. Data on disease surveillance is very secondary. Basically, this is the area which is really very poor. Even in the HMIS system developed by Uttarakhand, the district level information on the incidents and prevalence of various diseases is not available, and even the surveillance data is not properly provided at the district level. The another area is basically health service delivery data, which requires for the entire continuum of the care, which can be prevention, promotion, treatment, rehabilitation, or palliative cares for different disease conditions. That means whole gamut of the information for the health service delivery need to be there in order to get a proper information about the health condition of the people. That means we need a information on preventive, promotive, rehabilitative and palliative services, which is very insufficient. There are indicators which is very good like immunization and antenatal care, but in most other cases like NCDs, the information is insufficient in the state and especially in the districts. There are multiple gaps in the coverage indicators, access and use of the primary health care, mental health, injuries, nutrition, chronic health disease condition, acute illness, treatment of strokes, surgical care, rare condition, dementia, workers' health. Basically, we have linked the benefit or outcome, basically output and outcomes with respect to the services being provided. Whether it can be health facilities, how much services is being provided, and who are getting benefited. We need to have information on that side. In terms of treatment, data is insufficient to conduct an analysis by disease, type of health providers, and health facilities. This is an area which is very deficient in the state. We have generally seen that when a patient comes to the health facility, the diagnosis is not recorded or nobody take care of diagnosis. When the information is collected from the health facilities, they generally put some disease
which may not be actually, because even our health provider, even doctor is not recording the diagnostic in their own prescriptions. So this is an area which need to be improved a lot. Facility assessment, like mapping of service availability and readiness, which is often missing. Basically, where are the facilities? Where are the facilities are poor? Where are the manpower available? Where manpower not available? We need to map them in the service facility wise and monitor and Hello? evaluate such service delivery on the Hello? basis of population. Dr. Yes. Singh, Dr. Singh, sorry, Yes. we have other presentations also lined up. We have consumed your 15 I minutes. just finishing in Wrap 2-3 minutes. Yes, thank you, sir. Okay. Okay. So basically mapping is needed to be done basically health facility wise. And then another area basically I just talk about that affordability of healthcare, basically financial aspects. We are not able to link the fund availability from the provider functions and there. Even the affordability of healthcare facility, we get the information from NSS survey out of pocket expenditure, but such information is not available at district level. Also, it is very difficult to get whether the people have capacity to pay. That information is also missing. We need to have disaggregated data at all places. Incident of the public spending on health need to be assessed on regular interval. There are few suggestions actually I am giving that we need to develop a monitoring and evaluation framework so that we can able to link input activities, output with outcomes and impacts. Data availability is to link with the what type of data is available from what sources and where there is a need to be strengthened, we also be need to be done. Public sector and facility-wide data is also need to be strengthened because private sector data is not available. We need to be strengthened. HMI system is developed, but it is still not having very good information, which need to be there. Many places I have seen the HMIS system giving a very poor information is coming from the district level. So HMIS can be bridged for availability of district level data on many indicators. Geographic GIS system need to be developed and they need to be node functional in facilities and services. Village ward-wise health information is to be needed with respect to beneficiary instead of creating a facility-based. Today we have a system of facility-based sub-center data or primary health center data. It should be linked to the village-wise or ward-wise, and we should need to monitor such information. Complete and up-to-date coverage of civil registration system is very essential and it need to be strengthened, and we should ensure that civil registration system is to be complete and up-to-date. Thank you, please. And this was all I wanted to say. Thanks a lot. Thank you, Dr. Singh, for educating us on data collection, triangulation, and the data gaps at state and district level. Thank you so much. And thank you for also giving the suggestions to improve the data gaps and on M&E frameworks, etc. Now we have Dr. Munish Joshi, who will be focusing on public health data. Dr. Joshi is the Senior Public Health Advisor, EHI, and is a medical doctor having Masters in Public Health from JNU and PG Diploma in Hospital and Health Administration and Management with more than 34 years of experience. He has worked with WHO as National Consultant and Team Leader, Training in HR and M&E for World Bank and Global Fund supported projects. He is a certified NAB assessor. Dr. Joshi, over to you. Kindly please take care of the time slot. We have 15 minutes for each participant. I'm unmuting you as well as allowing you to share your screen. Thank you, sir. Dr. Joshi, please. Thank you, Sharon. Yes. Yeah, thank you, sir. Am I audible? Yes, sir, you are. Hello. Okay, thanks a lot. Namaskar and very good noon to everybody. It is almost 12 and this is a topic where I can speak. I have been speaking for so many years, बहुत सालों से, but keeping Sharon directive.
I'll stick strictly to the time and try to discuss the things as uh, as they are, and we'll get into my topic. On this 127th birth anniversary of the great statistician, Professor Dr. Padma Vibhushan Manobis, just two things about what exactly he did regarding the second 5-year plan, that is from 1956 to 61. That was of rapid industrial revolution and development. Bhilai Steel Plant, Rourkela, Durgapur, Tata Institute of Fundamental Research, all these things, ये सब उसी समय आए. I will be discussing in English, Hindi and English mix for the benefit of everybody. So, उस वक्त जब ये industrialization हुआ, that started a mass urbanization, workers coming for these industries. And these workers, when they were coming and residing in urban areas, the urban population seems to grow. And then we had these health requirements, the health infrastructure development, all these things. After the second 5-year plan, there was a substantial planning for public health infrastructure for these populations and others. And it was also associated with a population boom that started from 1960s, late 57, 61 onwards till the late 90s. Remember, we had a population dip in 1921, and then we started again after the Second World War. So public health things started coming up 61 onwards, and we had the world's biggest public health program, National Family Planning Program, which was later converted into National Family Welfare Program. So this was a context I was talking about regarding this thing. And then data. Data is knowledge. Data gives you the knowledge about disease prevalence, community, health behavior, environment, their practices, availability, resources, manpower. So data is the basic. So let's start with my presentation. So now I will, so many people have discussed before me about this theoretical aspect of statistics and everything. So I will skip all theory parts. I will just talk about the practical aspects of public health data and its application, how it can help in policy planning and their implementation. So what exactly is public health data? Data is, as you all know, is an orderly and systemic collection. सारे numbers, figures को एक particular subject के लिए आप उसको collect करते हैं. इसके लिए specified targets हो सकते हैं, communities हो सकती हैं, general population हो सकती है. क्या बताता है हमको ये? It tells us the existing health profile of the community and the availability of accessible health services. There are two terms, availability and accessibility. Availability मतलब सरकार ने आपका एक पीएचसी बना दिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया, डॉक्टर्स अपॉइंट कर दिए, वो कर दिया. एक्सेसिबिलिटी की मीन्स पब्लिक को कितना यूज कर पा रही है. बिल्डिंग बनी है, रोड अप्रोच नहीं है, वहां पर कैसे जाएंगे, वाटर लॉगिंग होती है बरसात में, रास्ता नहीं है, डॉक्टर पोस्ट हुआ वो भी अवेलेबल नहीं है, पीएससी है, रेडियोलॉजी मशीन है, लेकिन लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन accessibility and availability. Data tells us what is the availability and what is the accessibility. Our health outcomes depend on accessibility. So data, if you extract data only on availability, we will be very wrong. We will not be able to tell what is the accessibility and what are the outcomes and outputs, desired ones वो नहीं मिलेंगे. So basically public health data relates to the existing health profile, जो कम्युनिटी में अभी उनका हेल्थ प्रोफाइल है और उन्हें क्या क्या हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं. इससे ये फायदा होता है कि हम अपनी ब्लॉक स्पेसिफिक, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक, स्टेट स्पेसिफिक, कंट्री स्पेसिफिक हेल्थ पॉलिसी बना सकते हैं. इट शुड बी अ बॉटम अप अप्रोच, नीचे से लेकर ऊपर तक, नॉट द टॉप डाउन विच वी आर सॉरीली डूइंग. जरूरत क्या है? जब डेवलपमेंट होता है तो हमको एक वर्ड है आजकल बहुत यूज होता है, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग. आई विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन इन माय डिस्कशन. It is the most important thing. Simple data collection and keeping it there or making policies will not help at all. For helping making the public
healthy, well, and reaching the desired outcomes, we need evidence-based policy making. That is essential. Secondly, monitor the policy implementation process itself, how the programs are going on, track it, and come out with this, the end result, whether the outcomes were achieved or not. If yes, how much? How much was the deviation? What is the course correction? What will be the future policy? The other reasons, very concurrent, are the epidemics, pandemics, and the research. As we all know, you are all gurus of statistics. You know what indicators are. One line. They are very succinct measures that aim to describe as much possible in as few words as possible. कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बताना. दूसरी, हमको हेल्प करता है कि एक सिस्टम को समझने में, उसको दूसरे सिस्टम से तुलना करने में, एंड हाउ टू इम्प्रूव इट. अब छोटे छोटे एग्जांपल्स आप सबको यूज करते हैं. काउंट्स, कितने लोगों को ट्रीट किया, कितने लोग ट्रेन हुए, कितने कॉन्ट्रासेप्टिव्स बांटे, कितनी हमारे पास ट्रेन प्रोवाइडर्स हैं, टाइप्स ऑफ एमएमआर है, आईएमआर है, न्यूनेटल डेथ रेट है, टीएफआर है, क्वालिटी इंडेक्स. कई सारे हमने इंडिकेटर्स लिए और एक 7-10 को रखा. उसके बाद हमने एक क्वालिटी इंडेक्स, एक एग्जांपल देता हूं आपको. वर्ल्ड वेलनेस इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स है एक वर्ल्ड में, कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं. हु आर द हैप्पीएस्ट पीपल? एंड यू नो व्हिच कंट्री इज द टॉप? Bhutan. Bhutan has the highest happiness index in the world. Unfortunately, our country comes somewhere between 122nd or so. Delhi's इंडस्ट्रियल एरिया, डिसेबिलिटी है, कुछ है, बाकी हैंडीकैप्स हैं, उससे आप लाइफ ईयर्स एडजस्ट करने के लिए. एंड देन whether some disease is present or not, these are called thresholds, endemics, epidemics, pandemics. आजकल कोरोना का बहुत चल रहा है. अब a graphic. What is the scope of data collection? The scope is basically who gets sick, when he gets sick, कब बीमारी है, कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, क्या हमारे पास हेल्थ सर्विसेज हैं, किसके लिए हैं, कहां पर हैं, कितनी हैं, किस लिए चाहिए थी, कैसे. This data will be telling us the scope of services required and should be provided. अब डाटा इनकरेक्ट होगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? आपने इतना टाइम वेस्ट किया, मनी खर्च किया, डाटा इनएक्यूरेट आया, यूज करने में डेंजरस है, आपको डिजायर्ड आउटकम्स नहीं मिलेंगे, और खर्चा करने के बाद आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा. Ideal indicator should be reliable, appropriate, it should be valid, very easy. इतना डिफिकल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स डाटा होगा तो उसको वो समझ ही नहीं पाएगा, और डाटा कलेक्शन एंड कोलेशन एंड एनालिसिस की प्रॉब्लम होगी. इट शुड बी वेरी सेंसिटिव. थोड़ा सा भी फर्क होता है डायनेमिक्स में, हेल्थ डायनेमिक्स, पॉपुलेशन डायनेमिक्स में, तो इट शुड बी एबल टू कैच अप. दीस आर कॉल्ड एज अर्ली वार्निंग साइंस. हमको अर्ली वार्निंग मिल जाएगी कि अभी तक यहाँ पर कोई केस नहीं था, सडनली वी आर गेटिंग 4 केसेस ऑफ डायरिया इन अ विलेज. These it should be that sensitive. हेल्थ नीड्स क्या है कि हमारे पास हेल्थ में पर्टिकुलर पर्सन का कोई डिफिशियंसी है, कमी है, जिसके लिए वी नीड अ प्रिवेंटिव, अ क्यूरेटिव एंड अ कंट्रोल मेजर. जैसे कि आपको मेडिकल केयर देना है, सेफ वाटर सप्लाई, एडिक्वेट न्यूट्रिशन है, फैमिली वेलफेयर स्कीम्स हैं, इम्यूनाइजेशन है, रिसोर्सेज. यू ऑल नो द 3 M's: मैन, मटेरियल, मनी, टाइम. स्किल, नॉलेज एंड टेक्निक is very important now. What is the role of data in public health? Data is the foundation जिसके ऊपर आप पॉलिसी की इमारत खड़ी करते हैं. सेकेंडली, आपको एक बेसलाइन डाटा सर्वे करने से मिलता है कि क्या उनका हेल्थ स्टेटस है जिस कम्युनिटी को लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं. डिजीज बर्डन क्या है. उसके बाद चूंकि हमारे रिसोर्सेस फाइनाइट हैं, हमको मैक्सिमम एडवांटेज देना है, पर फैसिलिटी सर्विसेज देनी है, इसलिए हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि सबसे ज्यादा अनमेट नीड क्या है, फेल्ट नीड्स क्या है, टारगेट ग्रुप क्या है हमारा, किसको देना है, और जो सोसाइटी के अंडर प्रिविलेज्ड एंड मार्जिनल सेक्शंस हैं, who need maximum because they are the people who are usually are denied these services or are the services are inaccessible to them.
अब डाटा यूजर सब्जेक्टिविटी डायरेक्टली मिल सकता है हमको, सर्वेस करते हैं, डिजीज स्पेसिफिक सर्वेस, प्रोजेक्ट सर्वेस करते हैं, इनडायरेक्ट हॉस्पिटल एडमिशन हुए उसका डाटा जाता है, सेंटिनल हॉस्पिटल जो कि स्पेसिफिक डिजीज के लिए करते हैं, डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम्स हमारे यहाँ IDSP है। फिर इस डाटा से we can make a course correction that we made a policy, we wanted such outcomes, somehow it could not come, we are analyzing data, we came to the conclusion, no, we were wrong there. We have to revise it, revisit it, make some alterations. Digital, telemedicine, need of the hour in this time and in future also, we can monitor that. Plans for disaster management and pandemic, epidemic management, National Disaster Management Plan is based on data and data only. Future long-term planning is based on your available data feedback. Now, what are the examples? Now I'll come to the practical part. Examples of how we should make a health policy. I was working with Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare with National Center for Disease Control and National Vector-borne Diseases for so many years. So these two examples are my own. I was the team leader for that, along with EHI also. ये देखा हमने कि जो मलेरिया एंडेमिक एरियाज है, नॉर्थ ईस्ट के, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, वहां पर अगर लोग इंसेक्टिसाइड से ट्रीट की मच्छरदानी में सोते हैं तो उनमें मलेरिया का इंसिडेंस 50% से ज्यादा कम हो जाता है, 60% से ज्यादा कम हो जाता है, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स में हमको 65 to 70% कम मिला. So what we made the policy? We made the policy that we will saturate this entire endemic population with LLIN. ये डिसीजन कहां से आया? ये डिसीजन आया हमारा एविडेंस से जो हमने देखी. We made a policy and we got the desired outcomes. Now, as compared to 2010, the incidence of malaria in Northeast region is reduced to nearly 30% what it existed in 2007 to 2010. Second, dengue. 3-4 years back, dengue was rampant in Delhi. Then they did the study, and as you know, the mosquito Aedes डोमेस्टिक घर और घर के आसपास के इसमें ब्रीडिंग करता है, तो लोगों को हमने देखा कि वहां पर हो रहे हैं. अगर ये ब्रीडिंग प्लेसेस हटा दिए जाएं तो 65 to 70% कम हो सकता है. क्या किया? द गवर्नमेंट केम आउट विद एक्सटेंसिव IEC एंड डिड इट. एड भी आया, हर 7वें दिन में पानी बदल दो. दिस पॉलिसी पेड डिविडेंड्स एंड द इंसिडेंस ऑफ डेंगू decreased by nearly 72 or 73% 2019. Then coming to corona, ये NIH, US and CDC Atlanta and other places में it is an ongoing study, अभी भी स्टडी हो रही है. तो उन्होंने देखा कि मास्क पहनने से, फेस मास्क पहनने से और रिवर्स क्वारंटाइन. व्हाट इज रिवर्स क्वारंटाइन? जो बाहर से आ रहा है पॉजिटिव है उसको क्वारंटाइन के बाद जो वल्नरेबल है, 65 ईयर से ऊपर के हैं, बच्चे हैं, कोमॉर्बिडिटी है, उनको हमने क्वारंटाइन कर दिया ताकि वो वल्नरेबल है, उनको अगर होगा तो सीरियसनेस ज्यादा होगी और उनको डिजीज का मोर्टेलिटी बढ़ जाएगी. उसको बचाने के लिए क्या किया? we went for reverse quarantine and you can see the results. Even in India, if you talk about, you see the Kerala situation. फिर NFHS 3 और 4 के डाटा से we got to know कि अगर डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में हो, PSC है, CSC है, हॉस्पिटल है, तो मॉर्टेनल मोर्टेलिटी और इन्फेंट न्यूनेटल मोर्टेलिटी 50% तक रिड्यूस हो जाती है. We came with RCH2 along with institutional delivery and we were able to reduce neonatal mortality, IMR and MMR. So what is the inference? निष्कर्ष क्या निकला कि evidence based public health policy planning optimizes the desired outcome. जो हमें चाहिए वो मिलने की हमको उम्मीद ज्यादा हो जाती है. इसी तरह बिग डाटा है, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं, बिग डाटा इज वो डाटा है जैसे हॉस्पिटल्स के रिकॉर्ड्स आए, ये आजकल आरोग्य सेतु जो आप ऐप यूज कर रहे हैं, इट इज आल्सो बिग डाटा. मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड, ये किसी सर्वे या प्रोजेक्ट में नहीं लेते, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि आपको मिलता रहता है. इस डाटाबेस से आप एक लार्ज पिक्चर बना सकते हैं और ये लार्ज पिक्चर आपको फर्दर पॉलिसी प्लानिंग में हेल्प कर सकती है. डिजीज इंटरवेंशन जल्दी हो सकता है, मेडिकल एरर्स कम हो जाती हैं क्योंकि आप डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ पर क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हुआ. एडवर्स मेडिसिन दे रहे हैं तो एडवर्स रिएक्शन आपको मास में आपके पास डाटा है तो कैन चेक कि दवा का कोई इफेक्ट तो नहीं आता. रिसर्च नेटवर्क से आइडेंटिफाइंग द रिस्क फैक्टर्स फॉर दैट, पॉपुलेशन में, सब पॉपुलेशन में, ब्लॉक लेवल में, विलेज लेवल में, बाकी लेवल में, और टू मेक पीपल
achieve healthier behavior in healthier environment. Benefits दूसरा क्या है, फार्माकोविजिलेंस, मतलब दवा कितना इफेक्टिव है, दवा की एफिकेसी क्या है, एंड दवा का QA एंड QC, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस किया, कंटेनमेंट, इंप्रूवमेंट, एंड देन we can contain it and we can predict. आजकल जो इतने mathematical models you are seeing ना, the country will reach corona peak, this country will reach in this many days, this many weeks, this many weeks. This is the prediction of outcome. Then we can disseminate this knowledge to many people so that majority of the people are aware and they get a chance to utilize it, this thing. And we can reduce inefficiency, because if every single entity institution is doing this thing, it will be a misuse of manpower and resources. The same thing data can be shared with many people for various reasons, and thus minimizing the cost and increasing the efficiency. Now, excuse me, sir. Yeah, just finishing in 2 minutes. 1.5 minutes. Okay, sir. Okay. Thank you. I said that I will finish in 2 minutes. I'll stick to time. Don't worry. Okay, sir. These are some examples. Don't worry. There's examples of big data. That is in Estonia, European country. They did it. This is basically, I'm going example. The national identity scheme is getting the medical data for all these patients. Then is Arno Observatory is an Italian Society of Diabetologists and inter-university consortium called as Arno Seneca. It is working for 20 years. What did it? Pharmacy company से data लिया, hospital से data लिया, patient से लिया. उसके बाद उन्हें diabetes के patients का best course of treatment, hospitals के लिए, patient के लिए और outcomes के लिए और complication बचाने के लिए किया. इसका added value क्या हुआ? Improving sustainability of health systems, quality and effectiveness of treatment. ऐसे UK ने किया. UK is this data, health hospital episode statistics. UK is relying now for corona, very highly relying on it, and it has given very good results to UK NHS, National Health System of UK. Right? Gaps, Dr. Ravinder has already said. I will just say 2-3 things. Accuracy and authenticity of data is somewhere questionable. Real-time data generation is still a major challenge to us. Sustained and full participation of our hospitals in public sector data collection. Private sector almost left out, except for some notifiable diseases. Skilled manpower. HMIS not working optimally. And critical delay, this is very important, critical delay in data generation and transmission in disaster and epidemic times. This is very important. So what is the way forward? We can increase the awareness, educate and give training, data sources, expanded. There is a bit controversy here, how much of data, private data should be shared and all that. There are the bottom problem with Arogya, this thing, people had concerns. In France also, they started a COVID data app, a COVID app, and very few people were doing it. They are just suspicious of sharing their private data with the common this thing. And keeping the standards. And data analysis is very important. It's a very complicated thing. It should be done by qualified health professionals, and they should give it to the government and the policy makers. It should be a continuous process. HMIS, Dr. Ravinder has talked. Dedicated staff should be there. No, not आज यहाँ से नहीं आया तो यहाँ पर लगा दिया, ये काम कर रहा है. IDSP हमारा सिर्फ alert और data collect करता है. IDSP should also work as CDC, Atlanta and NIH. It should give analyze data. It should give recommendations also on that. And the last important point is this: surveillance data जो मिलता है IDSP से या कहीं से भी, we should cross check it so that know whether what data we are getting is real, correct, authentic or not. These are simple things that we can start with. And data, if evidence-based health policy is made, chances are that we'll be getting very good results. Some references will help me in making this thing. And thank you very much, everybody. And thank you, Sharon. I think I have limited my discussion to the allotted time slot. Thank you very much once again. Thank you, Dr. Joshi. Thank you so much for such an informative session, especially focusing on evidence-based policy making and on big data, which I think we all have started talking about and also using in some or the other way. Thank you, sir.
Now we have three more panelists who will be focusing on SDG 5, which is the other sustainable development goal under the thematic area this year for the National Statistics Day, gender equality. So we have our first speaker, Ms. Gitanjali Sharma Goyal, who is the Deputy Director, 20-Point Program, Government of Uttarakhand. She is a postgraduate in statistics and has been working with the planning department since 2007. Currently, she is the Deputy Director of 20-Point Program, wing of the Directorate of Economics and Statistics. Over to you, ma'am. Gitanjali, ma'am. Please unmute yourself. Okay. आदरणीय निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय, सभी सम्मानित स्पीकर्स और वेबिनार से जुड़े जितने भी सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स और सभी को मेरा नमस्कार और सांख्यिकी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सभी आज जानते हैं कि सांख्यिकी दिवस का हमारा टॉपिक है जेंडर इक्वालिटी और गुड हेल्थ बीइंग। तो जैसा कि हेल्थ पे पूर्व में स्पीकर्स ने काफी कुछ बोला है, तो मैं जेंडर पे कुछ बोलना चाहूंगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जेंडर इक्वालिटी आजकल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत इस पर बल दिया जा रहा है, तभी एक पूरा का पूरा एसडीजी का गोल इसको समर्पित किया गया है। और हमारे देश में तो महिलाओं को वैसे भी बहुत सम्मान दिया जाता है, पुराने समय से ही कहा भी गया यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो वर्तमान में हमारी क्या स्थिति है, वर्तमान में जेंडर स्टैटिस्टिक्स में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, इस बारे में मैं थोड़ा अपना प्रेजेंटेशन देना चाहूंगी। तो मैं बताना चाहूंगी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो 2020 में हमारे जेंडर गैप इंडेक्स में हमारी इंडिया की क्या स्थिति है। इंडिया 153 देशों में 112वें स्थान पर एग्जिस्ट करता है। ये 2020 में 2019 से 4 स्थान और नीचे आके 112 पर एग्जिस्ट करता है, जबकि कुल इसमें 153 कंट्री की रैंकिंग की गई है। अगर हम इसको अपने नेबरिंग कंट्री से कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि पूरे जेंडर गैप इंडेक्स की रैंकिंग में हम अपने जितने भी हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं इनसे लगभग हम पीछे हैं। इवन बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, श्रीलंका जो कि बहुत छोटे छोटे कंट्री हैं, ये भी हमारे से बहुत अच्छा कर रहे हैं। बांग्लादेश की ग्लोबल रैंकिंग 50 है, जबकि हमारी ऑल इंडिया हमारी ग्लोबल रैंकिंग 112 है। तो अगर हम इसको रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें इसको गैप को क्लोज करना है तो हमें लगभग 100 साल इस गैप को क्लोज करने में लगेंगे। तो इससे ये हमें पता चलता है कि हम अभी कितना काम करना बाकी है, अभी हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अभी जो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसको और सब इंडेक्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट इसका सब इंडेक्स है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी। इसमें अगर हम कंपेयर करें अपने इंडिया को नेबरिंग कंट्री से, तो भी हम इसमें 149th प्लेस पर हैं, जबकि सिर्फ एक पाकिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है जो हमारे से पीछे है, बाकी सब हमारे नेबरिंग कंट्री हमारे से आगे हैं। अगर हमें इस गैप को फिल करना है तो हमें 257 ईयर्स लगेंगे कि जब हम इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी में इक्वल आ पाएंगे। तो ये भी हमें बताता है कि हम कहाँ पर वीक हैं और किस तरह से हमको इसको आगे लेके जाना है और इस गैप को फुलफिल करना है। अगर हम दूसरा सब इंडेक्स देखें, हेल्थ एंड सर्वाइवल सब इंडेक्स,
इसमें भी इंडिया जो है 153 कंट्रीज में 150 पर एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि एक छोटा सा कंट्री, नेबरिंग कंट्री श्रीलंका, उसकी ग्लोबल रैंकिंग फर्स्ट है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि हम कहाँ पर अभी लैग कर रहे हैं, किस किस क्षेत्र में हमें काम करने की जरूरत है, या किन किन पॉलिसीज को हमें और लाने की जरूरत है, किस तरह से हमें उनको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करी जाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अगर हम इसका देखते हैं एजुकेशनल अटेनमेंट सब इंडेक्स, तो इसमें इंडिया 112वें स्थान पर है, जबकि चाइना और श्रीलंका वो इससे बेटर कर रहे हैं। अगर हम इस गैप को क्लोज करने की बात करते हैं तो हमें 12 साल लगेंगे, जबकि हम एजुकेशनल अटेनमेंट को फुलफिल कर पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सब इंडेक्स, इसमें हालांकि इंडिया की रैंकिंग बहुत अच्छी है, इंडिया 18th प्लेस पर काम कर रहा है, लेकिन बांग्लादेश जो कि एक हमारे देश का कहीं पार्ट रहा है, वो अभी उसकी रैंकिंग 7 है। तो इस और इस गैप को फुलफिल करने में करीब हमें 100 साल 95 ईयर और चाहिए, जबकि हम इक्वल पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कर पाएंगे। तो ये हमें ये दर्शाता है कि अभी हमें इसमें भी बहुत ज्यादा अभी काम करने की जरूरत है। अब अगर हम अपने कंट्री की बात करें तो नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स इंडिया 2019 एंड 20 रिलीज किया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं पूरे ये मैप आपको दिख रहा होगा कि ये पूरे इंडिया का मैप है। इसमें जितनी जो रेड दिख रहा है ये हमारी गोल नंबर 5 की परफॉर्मेंस है। सिर्फ 2-3 स्टेट ऐसा है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे केरला, सिक्किम, अंडमान निकोबार। बाकी पूरे कंट्री में महिलाओं के जो भी इंडिकेटर्स हैं या जो भी इंडेक्स हैं, उसके हिसाब से सारे के सारे स्टेट बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, एस्पिरेंट हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरे देश में कहीं भी महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। ये 2019 का हमारा मैप है। और अगर हम इस साल की बात करें 1920, तो इसमें भी बहुत ज्यादा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है हमें। सिर्फ एक हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर ने काफी इम्प्रूव किया है, लेकिन बाकी पूरा कंट्री अभी भी हमारा रेड जोन में है। तो ये हमें दिखाता है कि हमारे देश में भी अभी हमें बहुत ज्यादा महिलाओं के लिए कार्य करने की जरूरत है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस किए जाने की आवश्यकता लगती है। अब अगर हम अपनी रैंकिंग देखें उत्तराखंड की, तो एसडीजी इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड की जो रैंकिंग है वो नंबर 5 में, 18-19 में वो 13th रैंक पर था, और 19-20 में वो 2 प्लेस और नीचे डाउन होके 15th प्लेस पर आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि उत्तराखंड में भी अभी हमें बहुत ज्यादा काम करना है, बहुत ज्यादा फोकस करना है, जो कि इस इंडेक्स से हमें पता चल रहा है। अब अगर हम इंडिकेटर वाइज अगर हम देखते हैं, कि हम किस किस में लैग कर रहे हैं, हमारी पिछले साल की रैंकिंग क्या थी और इस साल की हमारी रैंकिंग क्या है। तो सेक्स रेशो ऑफ बर्थ में इंडिया का स्कोर पिछले साल, उत्तराखंड का स्कोर पिछले साल 15 था, जो कि अब और डाउन होके 7 पर पहुंच गया है। इसका मतलब हम पिछले साल से भी और नीचे इसमें गए हैं, जबकि इस पर और बहुत ज्यादा फोकस किए जाने की आवश्यकता है। अगर हम देखें एवरेज वेजेस टू मेल टू फीमेल रेशो, तो इसमें भी हम 86 पर थे पिछले साल, इसमें भी हम बहुत नीचे गए हैं, 55 पर पहुंच गए हैं। ये भी एक हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इस पर भी हमें कुछ नई पॉलिसीज बनाई जाने की जरूरत है। अगर हम देखें स्पाउसल वायलेंस, तो उसका हमें, क्योंकि पिछले साल से इस साल तक कोई नया डेटा ही नहीं मिला है, तो वही इसकी रैंकिंग है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि हमारा कितना ज्यादा इसमें डेटा गैप है, हम डेटा ही कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं एक साल से दूसरे साल में, या पूरे साल हमें यही नहीं पता चल रहा कि हम कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितना हमारा वायलेंस है, या किस तरह की हमारी डेटा कलेक्शन होना चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। परसेंटेज ऑफ सीट वन बाय वुमेन इन जनरल इलेक्शन, तो ये भी, क्योंकि इसमें अभी कोई डेटा चेंज नहीं हुआ है, तो पिछले साल की हमारी रैंकिंग है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में अगर हम देखें तो ये 17th पर हमारे इंडेक्स स्कोर था पिछली बार, जो कि इस बार डाउन होके 11th पर पहुंच गए हैं।
तो हमें इसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन देखे जाए तो ये हमारा स्कोर ठीक है हमारा, लेकिन फिर भी अभी इसमें बहुत ज्यादा कार्य करने की जरूरत है, क्योंकि हमारा एक छोटा सा जो स्टेट है नागालैंड, वो कहीं अच्छा कर रहा है हमारे से, तो हमें भी अभी और आगे इसमें क्राइम को रोकने की जरूरत है। अगर हम सेक्सुअल क्राइम की देखें तो उसमें भी हमारा स्कोर ठीक है, हम इंडिया से बेटर कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है उसमें बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमें और भी आगे जाना है, इसमें कुछ और हमें प्रिवेंशन करने होंगे। अगर हम ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इंडिकेटर की बात करें तो उत्तराखंड की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, सिर्फ 0.07% वुमेन लैंड होल्डिंग है, जबकि जो कि इंडिया के से भी बहुत ज्यादा कम है ओवरऑल इंडिया अगर हम देखें तो। इसको भी थोड़ा बढ़ाए जाने की जरूरत है, इस पर भी कुछ पॉलिसी बनाई जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब अगर हम बात करते हैं अपने उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट्स की, तो हमारी टीम ने एक उत्तराखंड जेंडर स्पेसिफिक इंडेक्स तैयार किया है, जो कि नीति आयोग की मेथोडोलॉजी पर है, जिसमें हमने लगभग 16 इंडिकेटर ऑल ओवर द SDGs, 17 जितने भी हमारे SDG हैं, जो भी विमेन से रिलेटेड इंडिकेटर्स हैं, उसमें से 16 इंडिकेटर्स को लेके हमने उत्तराखंड जेंडर स्पेसिफिक इंडेक्स तैयार किया है, जिसको हमने 4 थीम्स में डिवाइड किया है: हेल्थ एंड हाइजीन, सेफ्टी, एजुकेशन, एम्पावरमेंट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अपने डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग की है, वो मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगी। अगर हम एजुकेशन की बात करें, उत्तराखंड में वुमेन की एजुकेशन के आधार पर हमने इसमें 3 इंडिकेटर्स लिए हैं: ड्रॉप आउट रेट ऑफ अपर सेकेंडरी लेवल, ड्रॉप आउट रेट ऑफ प्राइमरी लेवल और लिटरेसी रेट। इन 3 इंडिकेटर्स पे हमने अपने सारे डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग निकाली है। इसके अकॉर्डिंग जो हमें डेटा मिला है अब तक, उसके अकॉर्डिंग देहरादून हमारा फर्स्ट रैंकिंग है, और हरिद्वार हमारा 13 रैंक पर है। तो इस आधार पर हम देख सकते हैं कि हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और किस इंडिकेटर्स में उसको और कार्य करने की जरूरत है, किस इंडिकेटर पर फोकस किए जाने की जरूरत है। जैसे कि हरिद्वार अगर हमें देख रहे हैं कि एजुकेशन में पिछड़ रहा है, तो हमें एजुकेशन पर उसमें फोकस किए जाने की जरूरत है स्पेसिफिकली। इसी प्रकार हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स की रैंकिंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स भी हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि उनको अपने डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह से कार्य करना है, किस तरह की योजनाएं आप डिस्ट्रिक्ट के लिए बना सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लान से या और किसी से, या अपने डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सेक्टर के जो भी ऑफिसर्स हैं उनसे आप डिस्कस करके या उनको इस तरह की रिपोर्ट देके आप बता सकते हैं कि हम यहाँ पर पिछड़ रहे हैं, तो हमें इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम देखें हेल्थ और हाइजीन सब इंडेक्स में, हमने इसमें 6 इंडिकेटर्स लिए हैं: परसेंटेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, percentage of pregnant women registered in first trimester, percentage of pregnant women receive complete vaccination, percentage of pregnant and lactating women cover under Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, pregnant and lactating women beneficiary under ICDS, और proportion of schools with separate toilet facility for girls. हेल्थ और हाइजीन में का अगर हम इंडेक्स देखते हैं तो हरिद्वार इसमें फर्स्ट नंबर पर है, उसकी रैंकिंग फर्स्ट है, और जबकि अल्मोड़ा इसमें 13th रैंक पर है। तो इसमें भी हम देख पाते हैं कि हेल्थ में हमारा कौन सा डिस्ट्रिक्ट पिछड़ रहा है और कौन सा अच्छा कर रहा है, तो इस तरह से हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। गीतांजलि मैम, 4 मिनट है आपके प्रेजेंटेशन के लिए, जस्ट अ रिमाइंडर। थैंक यू। थर्ड ये हमारा वुमेन एम्पावरमेंट। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो इसमें हमने 4 इंडिकेटर्स लिए हैं: सेक्स रेशो वुमेन, परसेंटेज सीट वन बाय वुमेन इन जनरल इलेक्शन, परसेंटेज ऑफ वुमेन अंडर मनरेगा, बेनिफिशियरी अंडर विडो पेंशन स्कीम। तो इसमें भी हमारा पिथौरागढ़ हमारा फर्स्ट रैंक पर है और देहरादून हमारा 13th रैंक पर है। तो इसका मतलब देहरादून डिस्ट्रिक्ट में वुमेन एम्पावरमेंट में हम पिछड़ रहे हैं।
तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ स्टेप्स कर सकता है। अगर हम वुमेन सेफ्टी की बात करें तो इसमें हमने 3 इंडिकेटर्स लिए हैं, डॉरी केसेस रिपोर्टेड पर लाख पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन सब्जेक्टिव टू साइकोलॉजिकल एंड सेक्सुअल वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी केसेस। इन 4 इंडिकेटर्स पर रुद्रप्रयाग हमारा फर्स्ट रैंक पर है, जबकि हरिद्वार हमारा 13th रैंक पर है। तो हरिद्वार की रैंकिंग ये दिखाती है कि सेफ्टी के मामले में हरिद्वार बहुत पिछड़ा हुआ है और उसको सेफ्टी के कुछ और मेजर्स और कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अगर हम ओवरऑल कंपोजिट रैंकिंग देखते हैं तो पिथौरागढ़ हमारा फर्स्ट पे आता है, 4 सब इंडेक्स को मिला के जो कंपोजिट आता है, और हरिद्वार हमारा 13th प्लेस पर है। उत्तरकाशी 10th पर है, चमोली 6th पर है, रुद्रप्रयाग 3rd पर है, टिहरी 12th पर, देहरादून 5th पर, पौड़ी 7th पर, बागेश्वर 2nd रैंक पर है, अल्मोड़ा 11th, चंपावत 9, नैनीताल 4 और उधम सिंह नगर 8th रैंकिंग पर है। तो इससे ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग हमने निकाली है जेंडर स्पेसिफिक इंडेक्स में। एक ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि HDI हमारी एक रिपोर्ट बनी थी, HDI के अकॉर्डिंग रैंकिंग क्या है और हमारी इसके जेंडर स्पेसिफिक रैंकिंग क्या है। तो अगर जहां हमारा HDI में देहरादून फर्स्ट प्लेस पर है और हरिद्वार 2nd प्लेस पर है, वहीं हमारा GDI रैंकिंग में हरिद्वार 13th पर और देहरादून 12th पर है। ये हमें शो करता है कि HDI में जिनमें हम जो डिस्ट्रिक्ट अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम अच्छी है, जिनका GSDP अच्छा है, वो जेंडर पैरिटी में या जेंडर इक्वालिटी में वो पिछड़े हुए हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ध्यान दिए जाने की जरूरत है कि अगर कोई इकोनॉमिकली जो डिस्ट्रिक्ट अच्छे हैं तो उसमें जेंडर इक्वालिटी क्यों नहीं आ रही है, तो इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस तरह से ये हमने एक इंडेक्स तैयार किया है, और क्योंकि अभी हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बनाया है, भविष्य में हम इसको ब्लॉक लेवल तक बनाना चाह रहे हैं। जितने भी यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर्स हैं उनसे सबसे निवेदन है कि इसको ब्लॉक लेवल तक बनाया जाए, और हमें इस तरह से डेटा उपलब्ध अगर हो सके कि हम इन इंडेक्स को पता कर पाए कि कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा ब्लॉक अच्छा कर रहा है किस फील्ड में और किस फील्ड में उसमें और कार्य करने की जरूरत है। तो ये एक हम स्पेसिफिकली प्लानिंग के पर्पज से या डेटा उसके पर्पज से या एनालिटिकल पर्पज से हम एक अच्छा डॉक्यूमेंट बना पाएंगे। सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर से निवेदन है कि वो हम ब्लॉक लेवल डेटा उपलब्ध कराया जाना के प्रयास करें। इसके लिए एक हमें अपने डेटा कलेक्शन सिस्टम को भी इम्प्रूव किए जाने की जरूरत है। अगर हमारा डेटा कलेक्शन इजी तरीके से हो पाएगा या उसका कुछ ऑथेंटिक डेटा अगर हमें मिल पाएगा, तो ये रैंकिंग भी ऑथेंटिक रैंकिंग होगी और हम अच्छे से प्लानिंग कर पाएंगे। तो अभी यही मैं दिखाना चाह रही थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर इसको देख पाएं और आगे हम सब मिलके इसमें कार्य करें और इसको एक माइक्रो लेवल तक हम इसकी रैंकिंग या इंडेक्स तैयार कर सकें। इस आधार पर हमने अभी जेंडर का बनाया है, हम किसी भी सेक्टर का इंडेक्स बना सकते हैं और किसी भी सेक्टर का हम इम्प्रूवमेंट मेजर कर सकते हैं। तो फिलहाल क्योंकि टाइम कम है तो मैं अभी इतना ही बताना चाहूंगी, और इसको प्रेजेंट करने के लिए मुझे समय देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गीतांजलि मैम। आपकी प्रेजेंटेशन से बहुत कुछ डेटा के बारे में पता चला कि उत्तराखंड में ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स कौन से लेवल पे है ऑन SDG 5 के डिफरेंट इंडिकेटर्स पे। थैंक यू सो मच मैम। नाउ वी हैव मिस रंजनी के मूर्ति हु इज आवर नेक्स्ट पैनलिस्ट. She is a researcher and consultant, gender and development, and has a background in gender and development. She has 33 years of experience in evaluation, mainstreaming, research and training or toolkit development on gender and development, with a focus on issues of agriculture, food security, poverty reduction, health, disaster risk reduction, and SDGs. She has also worked with different NGOs and UN organizations and national governments. Over to you, Ranjani ma'am. But before you start, I would request all our participants, if you have any questions or comments, kindly post it on the chat option
so that we can take it up during the Q&A in the end. आपके पास कोई भी सवाल या कोई कमेंट है तो प्लीज चैट ऑप्शन में लिख दीजिएगा ताकि हम एंड में Q&A सेशन में लें. Over to you, Ranjani ma'am. Hello, Ranjani ma'am, are you having any trouble with the share screen? Hello? Hello? Yeah. Yeah. Shall I begin? Yes, yes, please. Okay. Sorry. There was a glitch in unmuting. Okay. I would like to build on what Gitanjali has presented already and not repeated. My focus is on SDG 5 and seeing if the present trends continue, will Uttarakhand achieve and what should it do in the future to move towards that? So the objectives, some which is already covered, compare SDG 5 targets at India and Vision 2030. Now there is some discrepancy between the India indicators and the Vision 2030. I will emphasize that. Assess progress, but I won't be comparing 1 year. I'm going to compare 5 years, 10 years and say if the same rate of progress continues, will we achieve and what more needs to be done. And look at the Vision 2020 proposal for SDG 5 and recommend strategies so that Uttarakhand moves towards SDG 5. So the main arguments which I'm going to make, this bit I'm doing it in English, then I'll switch to Hindi. SDG 5 indicators of Uttarakhand are realistic in Vision 2030, but not as comprehensive as the Indian one. For example, sexual and reproductive health and rights is totally missing from the Vision 2030 document. And unity in sex ratio at birth, there is need for rethinking because sex ratio at birth is masculine. So the ideal sex ratio at birth is not 1000, but is 954 or something by WHO. And there's a more intersectionality which is required, not only district-wise, but caste, class, religion-wise. Now, trends on progress, if you take, Uttarakhand has achieved gender parity in school enrollment, but we don't know about the target with regard to ability to pass, retention and passing the exams in PRI representation, and targets on reducing child marriage. You're doing very well. Violence against women is also doing better than India, but then with increase in COVID, whether child marriages will go up, whether domestic violence cases are being reported. So we need to look at that. Yeah. But gender equality in sex ratio at birth is really declining. Labor force participation is bad. Land ownership is very low. Unpaid work is high. And representation in legislative assembly is very little compared to the national parliament also. So India is doing better on some front, SRB, landholding, cash earning, political participation. Uttarakhand, I'm talking about the parliament legislative level, and Uttarakhand better on other level.
Now, Vision 2030 is very well informed on SDG 5 and proposes measures to combat sun preference, time spent by women in collecting fuel and water, bringing women out of agriculture into other work, and notes that male migration is posing a constraint. But then with post-COVID, things have changed dramatically. Men are coming back, and maybe bringing women out of agriculture, it may or may not be the best thing to do, because COVID is higher in the cities and towns when compared to rural villages. So really suggesting widening focus in Vision 2030 document from economic employment to economic empowerment, which includes land rights, bringing women into the market. I'll come to suggestions in the end. Women's political participation at legislature level, PRI level, you're doing very well. Looking at care and after school care, child care facilities, so that women can go to work without worrying. Gender sensitization of men and boys, because they're all coming back now. I mean, migrant men are coming back, and we need to work with men on gender equality, otherwise SDG 5 will not be achieved. Putting back missing indicators. It is not only the missing indicators on sexual and reproductive health and rights, but land ownership with regard to wages, equal wages, all these are missing in your Vision 2030 document. Yeah, and mainstream gender and equity in COVID-19 response and COVID-19 and SDG 5 plans. So those are the main. But quickly अभी मैं हिंदी में बोलूँगी कि जो national और भारत का और उत्तराखंड Vision 2030 में थोड़ा अंतर है. एक है कि ये पहला इंडिकेटर है ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को एंड करो. हाँ, उसमें एक इंडिकेटर है उत्तराखंड का स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ये बहुत वेग है, उसको थोड़ा स्पेसिफिक करना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं यहाँ. हाँ, और सेकेंड टारगेट है एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. यहाँ आपने टू रेज सेक्स रेशियो एट बर्थ टू यूनिटी लिखा है. यूनिटी कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैस्कुलाइन सेक्स रेशियो एट बर्थ इज द नॉर्म. So you need to bring it to 954 to end violence against women in public and private space. Now private में data है NFHS में, पर public का कुछ data ये reported in NCRB है, पर वो reported surveillance तो नहीं है. वो जब पुलिस को जब confidence आती है report करते हैं वो ही cover होता है, वो काफी नहीं है. तो तीसरा है एलिमिनेट हार्मफुल प्रैक्टिसेस. उसमें चाइल्ड मैरिज है, फोर्स्ड मैरिज भी इंक्लूड करने से अच्छा होगा. उस पर डेटा है हमारा पास. तो एक पब्लिक वायलेंस के ऊपर अच्छा डेटा नहीं है, रिपोर्टेड है पर रिपोर्टेड इज नॉट इक्वल. और एक है अनपेड केयर वर्क, टारगेट 4, रिकॉग्नाइज एंड वैल्यू अनपेड वर्क. उसमें हमारा इंडिकेटर जो है वो है शेयर ऑफ वुमेन कलेक्टिंग वाटर एंड फ्यूल इन टोटल वुमेन एंगेज्ड इन डोमेस्टिक वर्क वुड बी हाफ टू 26%. ये इंडिकेटर और भी अच्छा करना चाहिए. कितना टाइम मार्केट एक्टिविटी में होता है, कितना अनपेड, और पुरुष का कितना होता है और महिलाओं का. इसका थोड़ा डेटा अवेलेबिलिटी है हमारा सर्वे स्टैटिस्टिकल नेशनल डेटा में. टारगेट 4 वुमेन्स फुल पार्टिसिपेशन. पंचायत आपने डाला है वो बहुत अच्छा है, और एंटरप्रेन्योर्स डाला है, पर लेजिस्लेटर का कुछ टारगेट नहीं है आपका. तो विजन 2030 को जब रिविजन होती है तब ऐड कर सकते हैं. ये पूरा 5A का जो है लैंड होल्डिंग, इकोनॉमिक रिसोर्सेज के ऊपर जो इंडिकेटर्स है, land holding,
वेजेस में कितना अंतर, बैंक अकाउंट में कितना अंतर, और बोरोवर्स क्रेडिट कितना लेते हैं, ये सब आपकी विजन 2030 डॉक्यूमेंट में नहीं है पर नेशनल में है। इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए। ये NFHS में काफी डेटा मिलता है और एग्रीकल्चरल सेंसस में भी मिलता है। और IT जो है 5B, ये बहुत कोविड के टाइम पर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी IT से ही एजुकेशन होता है, IT से ही इंफॉर्मेशन आता है, तो इस पर इक्विटी, मोबाइल फोन जो भी हो उस पर जो इक्विटी है वो ऐड करना इम्पोर्टेंट है। अभी प्रोग्रेस देखें तो मेरा मेथोडोलॉजी गीतांजलि जी ने जो बताया उससे बिल्ड करती हूँ। ये है कि एक बेस ईयर है, रेज द सेक्स रेशियो एट बर्थ। सो बेस ईयर पर U का मतलब है उत्तराखंड, I का मतलब है इंडिया। 912 था, 888 हो गया, डिक्लाइन। ये दोनों का अंतर लेकर डिवाइडेड बाय 912, that percentage divided by 10 years, 2005 या 2015. So that gives me -2.6. So if this same trend continues, we will not, Uttarakhand will not achieve gender equality by 2030. So the question is looking at trends and seeing the rate of change per year for 10 years and whether it will be achieved. So ये methodology अपनाकर थोड़ा indicators के लिए हमने किया है। उस पर लगता है कि sex ratio at birth 954 अचीव नहीं होगा, हमें और कुछ strategy चाहिए। Gender parity in primary secondary education अचीव हो गया, पर लड़कियां ज्यादा गवर्नमेंट स्कूल जाते हैं और लड़के ज्यादा प्राइवेट उत्तराखंड में। वुमेन चाइल्ड मैरिज अचीव हो सकता है, हाँ, उत्तराखंड पर भारत में लेस। और एग्रीकल्चर लैंड होल्डिंग उसी मेथोडोलॉजी में हमने जो अपनाया है उस पर नहीं हो सकता है, हाँ, लैंड होल्डिंग दोनों इंडिया और उत्तराखंड में। और जो कैश में अर्न करते हैं वो भी नहीं हो सकता है, दोनों में डिक्लाइनिंग हो रहा है। देखिए इंडिया में डिक्लाइनिंग, उत्तराखंड में वही है 15%। स्पाउसल वायलेंस उत्तराखंड अच्छा हुआ है, पर कोविड के बाद क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम, आपको मुझे बताना होगा और उसके लिए क्या करना चाहिए। और पार्लियामेंट टोटली अनलाइकली। तो हमें देखना है स्टैटिस्टिक्स ट्रेंड देखकर, रेट ऑफ चेंज पर ईयर लेकर अचीव होगा कि नहीं अचीव होगा तो क्या करेंगे। ये है आपकी विजन 2030। मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ, पर इसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, डिस्क्रिमिनेशन है, सन प्रेफरेंस है, पर इसमें ये एम्प्लॉयमेंट के अलावा हमें इकोनॉमी चाहिए और ये सन प्रेफरेंस को नेगेट करना है और लेजिस्लेटर में महिलाओं को आना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक है CSR Ranjani, और just 3 minutes more, huh? Yeah, fine. I'm finishing. Okay. So awareness on declining CSR CRB, आपने ये जो स्ट्रैटेजी अभी है विजन 2030 में, implementation of PSC PNDT, full-time employment of women, secondary and post-secondary education, toll-free number for domestic violence, ये आपकी विजन 2030 में है। मेरा रिकमेंडेशन है कि इसके अलावा हम 13% प्रॉपर्टी महिलाओं के पास रजिस्टर हुआ है, लैंड होल्डिंग। हमें लगता है कि जैसा घर का है अभी सरकार का स्कीम, जॉइंट टाइटल में करो या महिलाओं के नाम पर करो, वैसा ही लैंड रजिस्ट्रेशन पूरे के पूरे जॉइंट नेम पर होना चाहिए या महिला नेम के नेम पर। और ये नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ एग्रीकल्चर से बाहर लेकर आएंगे, हम वैल्यू चेन के द्वारा काम हो सकता है। ईफैड ने काफी इस पर एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन पर काम किया है, क्राफ्ट वैल्यू चेन, और जो भी मार्केट स्पेसेस है सरकार उसमें अलग एरिया होना चाहिए महिलाओं को बेचने के लिए, कोटा होना चाहिए MSME पर, प्रोड्यूसर कंपनी महिलाओं का बनाना चाहिए,
एक महिलाओं का बैंक जैसे सेवा ने बनाया वैसा हो सकता है, आफ्टर स्कूल केयर, प्लेसमेंट सर्विसेज। पॉलिटिकल में, लेजिस्लेटर में एक एक पार्टी कोटा हो सकता है क्या कि हम इतना स्टैंड करेंगे, उनका ट्रेनिंग देना। हाँ, सिर्फ पीआरआई पर नहीं, पर लेजिस्लेटर में भी आना चाहिए ताकि वो इन्फ्लुएंस करें बाकी पॉलिसीज को। और जेंडर बजटिंग, सोशल हमने बोल दिया, जेंडर सेंसिटाइजेशन ऑफ मेन, उसके अलावा ट्रेडिशनल लीडर्स, ट्रेडिशनल काउंसिल, एडोलेसेंट बॉयज एक्सेट्रा। अब ये जो मिसिंग टारगेट इंडिकेटर, वो अगला विजन डॉक्यूमेंट। पर कोविड अभी है, इसके कॉन्टेक्स्ट में ये लास्ट है। एक होना चाहिए कैश ट्रांसफर टू वुमेन, हाँ, तो उनका एम्पावरमेंट भी होगा और SDG 5 को भी कंट्रीब्यूशन होगा। MNREGA सरकार ने बनाया, 200 डेज देंगे, उसको यूज कर वाटर हार्वेस्टिंग, वुड लॉट्स कर सकते हैं, या MNREGA को भी चाइल्ड केयर से जुड़ो, हाँ, तो वो भी अच्छा है। ICT एक्सेस, इक्वल एक्सेस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो इक्वल एक्सेस ऑफ वुमेन एंड मेन टू प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट रिलेटेड टू कोविड। अभी बोल रहे हैं कि पुरुष को ज्यादा हो रहा है क्योंकि उनको हाइपरटेंशन ज्यादा है, ये है, पर ये स्टडी नहीं हो रही है कि महिला सिम्टम्स होकर आ रहे हैं कि नहीं। हाँ, तो वो भी स्टडी करना चाहिए कि कितना महिला का टेस्टिंग हो रहा है, कितना पुरुष का टेस्टिंग हो रहा है। हाँ, तो ट्रेनिंग, कोविड हेल्पलाइंस टू डील विद वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, रिलीफ फॉर MFI पेमेंट। तो मुझे लगता है कि SDG 5 to conclude, if it is to be achieved in Uttarakhand, we need to look at trends over 5-year, 10-year and see whether if the same trend continues, Uttarakhand will achieve which district, which caste, which tribe, etc. And what is necessary to achieve by 2030. So the data analysis should be linked to planning and action. Thank you. Thank you so much, Ranjani, for this session. Thank you so much for deliberating upon the data gaps and also giving your recommendations and suggestions for Uttarakhand to be able to achieve SDG 5, especially in the current context. Thank you. Thank you. My pleasure. So we have been joined by Major Yogendra Yadav, the Additional Secretary Planning of Uttarakhand Government. He is a State Civil Services Officer of 1999 batch and has held various appointments like SDM, ADM, ACEO and Vice Chairman of different development authorities. He is presently holding the appointment of Additional Secretary Planning, Social Welfare and Women Welfare, as well as Commissioner Disability Uttarakhand. I would like to invite you, sir, to please share a few words. Light is falling. I think it will be better this way. Is it okay now? Sir, your voice is echoing. Is there any other system also being used? Is it okay now? Yes, sir. Please. Sharon, is it okay now? Yes, sir, it is okay. Okay. First of all, heartiest congratulations to everybody who is now connected on the National Statistics Day. And it has been my pleasure to be here today. I was late, I'm sorry. I wanted to be in this session from the starting itself so that I could hear the resource people who are there
I was just listening to Madam Ranjini just 5 minutes back, and it was a pleasure listening to her. Before that, I am told that Dr. Ravinder Singh had spoken about the health. Dr. Munish Joshi has also spoken. And from our side, there was Gitanjali. She made a presentation, and finally, Ms. Ranjini K. Murthy was there. So I missed out on the majority discussion, but irrespective, I think today we must be having a very fruitful discussion with all the stakeholders who are there today. And we hope that with the resource person knowledge, we all have gained something as far as the SDG on health and gender is concerned. So nothing more to add from my side. In fact, the purpose was to listen to you, which unfortunately I missed. But nevertheless, Sharon, thanks for introducing me to all the resource people and the participants who are there on this webinar. And I have another meeting. I wish you all the best. And I hope this fruitful discussion will continue till whatever time we are supposed to be here. I think I'm told it is till 1 o'clock. But maybe if there are some certain important things to discuss, we can extend it to further 10 or 15 minutes more. So thank you, all the resource people, once again, Dr. Ravinder Singh, Dr. Munish Joshi, and Ms. Ranjini K. Murthy for being a part of this webinar. We have Dr. Nilanji Sardesh Pandey also, I am told, the project anchor of Sahaj. So we wish you all the best, and thank you once again for being with us and enlightening us on these two major issues of health and gender. Thank you. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Okay, carrying on with our panelist, we have our last panelist, our last speaker, but not the least. We have Dr. Nilanji Sardesh Pandey, who is the project anchor, Sahaj. She has been working for more than a decade on issues such as health equity, public health system functioning. Her doctoral research focused on women's access to health services with reference to young women who underwent hysterectomy. Currently, she is working as a consultant for a SDGs related project being implemented by an organization called Sahaj, especially the goals related to health and gender equality. Dr. Sardesh Pandey will be taking us through the gender index, which has been developed by Equal Measures 2020. Over to you, Dr. Sardesh Pandey. Thank you, Sharon. Yeah. Just give me a moment to sure. upload my presentation. At the outset, I would really like to thank the organizers for this opportunity to share our work on SDG Gender Index. Yeah, is my screen visible? Yes, it is. Yes. Okay, thank you. Yeah. So basically, I think, and thanks a lot for to all the previous speakers who spoke about such like very good data information about Uttarakhand as well as about gender equality related work in Uttarakhand. So I would like to take it further and talk a little bit from the global perspective. So मैं क्या चाहती हूँ कि अगले मेरे पास एक 10-15 मिनट हैं, तो ग्लोबल लेवल पे इसके ऊपर क्या काम चल रहा है ये थोड़ा मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये बहुत अच्छा है कि उत्तराखंड ने अपना खुद का एक एसडीजी जेंडर इंडेक्स बनाया है, तो इसी काम को और थोड़ा आगे ले जा सकते हैं क्या, इसके बारे में थोड़ी चर्चा हो सकती है। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सहज. सहज इज बेसिकली बेस्ड इन बड़ौदा एंड इट्स वर्किंग फॉर लास्ट 30 years. एंड हमारा जो काम है एसडीजीज का, so we are national partners of an organization called Equal Measures 2030. So Equal Measures 2030 is basically a partnership of 10 different organizations. As you can see, उसमें Arrow है, Bill and Melinda Gates Foundation है, Data 2X है, One Campaign, Plan International. So ये अलग-अलग लोग जो हैं वो इकट्ठा एक साथ काम कर रहे हैं और किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, ताकि ये जो डेटा हम लोग सब बात कर रहे हैं ये डेटा सिर्फ गवर्नमेंट के पास ही ना रहे, तो जो जेंडर एडवोकेट्स हैं उनको भी ये डेटा को इस्तेमाल करने आना चाहिए. So basically we are trying to make it possible to use the data for gender advocates, and currently the work is happening in 7 countries: Colombia, El Salvador, India, Indonesia, Kenya, Senegal and Tanzania.
and so we are the India partners. So straight away coming to the Equal Measures 2030 SDG Gender Index, ऐसे तो काफ़ी सारे इंडेक्स हैं जो SDGs को देख रहे हैं, जैसे इंडिया में नीति आयोग ने खुद ने एक SDG इंडेक्स बनाया है। तो इसकी खासियत लेकिन ये है कि ये सिर्फ जेंडर इक्वालिटी के गोल को नहीं देख रहा है या गिने चुने 2-3 गोल SDGs को नहीं देख रहा है। इनफैक्ट इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव टूल to explore gender equality across SDGs. And currently we have data for 129 countries. So almost 95% of world's women and girls are residing in these 129 countries. And the index is covering 14 goals. So I felt this is one of the strengths of this index that that can be used by by Uttarakhand also. And currently there are 51 indicators. So one of my points was that gender equality ये एक lens है. मतलब हम ऐसा नहीं सोचे कि SDG 5 जो एक standalone goal है gender equality. So if as a state, if we are doing good in one goal, but what we need to do is develop a lens to look at all the goals from gender lens. और उसके लिए हमको कुछ अलग तरीके का data रखने की बहुत ज़रूरत होगी. जैसे many times as researchers the key challenges we feel is gender disaggregated data for many indicators. तो data तो हम लोग collect करते हैं. Government has lot of data and lot of efforts are being taken to collect data very meticulously और time real time भी करने की कोशिश कर रहे हैं. थोड़ा उसमें अगर बदलाव लाएं, जैसे gender disaggregated करें या vulnerable groups के लिए करें, तो it will be more useful. So when this index was developed, I think the first important aspect of this gender index was it is relevant to the SDGs framework. So whatever work is happening within SDGs, it is an attempt to cover all the SDGs. It is very comprehensive and some of the issues, जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी कि हम लोगों को gender बोलते हैं तो empowerment, economic empowerment, health, education, ये immediately हमारे सामने आ जाते हैं. But some SDGs like energy, climate change, urban settings, tax policy, which otherwise we don't recognize as gender indicators. So this is one of the index which actually is having indicators for looking at other SDGs also from the gender lens. Third, very important, and I think as policymakers and as implementers, it will be of use to government also, that because हमारी जो सारी कोशिश है, we want to improve the lives of girls and women. So this index is focused, policy focused. So it is academic interest से indicators इसमें नहीं है. इसमें indicators ऐसे ही चुने गए हैं जिसके लिए policies programs हैं. So I think that is another very important aspect, and it is easy to use because we want the gender advocates also to be able to use it. Thankfully, today here, all of you are statisticians and working with data. So it won't be a challenge for you to look at the data, but when we work at the grassroots, or maybe you may also feel that when you go down like block level or below that, probably easy to use indicators will be helpful. There are several data sources. This is just one of the list. So it has National Statistical Office's data, UN agencies data, other NGOs, then opinion polls like Gallup, then other indices like International Budget Partnership. So these were some of the indicators. These were some of the criteria for selection of the indicators. And like I said, SDG alignment, relevance, and very importantly, transformational potential. So I think one point we have been discussing, हम लोग बात कर रहे हैं कि ये goal हम कब achieve कर पाएंगे. So I think very important the transformational potential. तो ऐसे indicators जिसमें हमको पता है कि अगले 5 या 10 साल में हम कुछ बदलाव ला सकते हैं. Because there are certain indicators related to gender equality, जैसे social change है. वो शायद हमारे अगले 5-10 साल में नहीं आएगा. But then it is important to focus कि हम क्या बदलें ताकि gender equality में सुधार आए. This is just to show you कि ये इस तरीके से है 129 countries में you will get rank for each of these countries, and India is I will just come to where India is, but you can see the data. I'll also share the data links. So for every goal that has been selected, for example, SDG 1, where is the overall achievement and what is the gap? So as you can see that partnerships, the goal related to partnership 17 is lagging behind, whereas the best one is the hunger and nutrition. So I think all the work that has been in the world around hunger and nutrition, that has given a good scoring. For SDG 5 जो 5 indicators चुने गए हैं वो है child early and forced marriage, and I think it's very relevant. आजकल फिर ये चर्चा शुरू हो गई कि age at marriage बढ़ा के 18 से 21 की जाए. So I think child marriage, early marriage, forced marriage, these are still a very relevant and reality for many women or many girls in India. So that is a very important indicator. Second is perceptions of partner violence.
सो ये भी है हमारे पास एक्चुअल डेटा, जैसे रंजनी जी भी कह रही थी कि इट इज रिपोर्टेड डेटा. सो इफ women आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट टू रिपोर्ट, रिपोर्टिंग कहीं ना कहीं कम है, और रिपोर्टिंग के आधार पे हम कह नहीं सकते कि एक्चुअली कितना वायलेंस हो रहा है. दिस इज ऑल्सो परसेप्शन, लाइक देयर आर मेनी women in India who think that it's okay if your husband slaps you. So ये perceptions related data है, which is also indicates that how women have actually internalized कि उनको मारा तो इतना problem नहीं है. Third is legal grounds for abortion, and I think this is, we have a law, we have MPP Act, but still there are a lot of debates going on about increasing the age. कौन से weeks तक लोग abortion कर सकते हैं. Then two other are political participation and women in parliament and women in ministerial roles. So unfortunately, and I think Gitanjali ji had also shared that there are several concerns. It is very true that India as a country, हम लोग यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते हम लोग कहते हैं. So कहीं ना कहीं हमारे संस्कृति में वो था महिलाओं को एक दर्जा देना. लेकिन unfortunately in last several hundred years we are not living by our words. So हम लोग कहीं ना कहीं gender inequality के मामले में काफी नीचे हैं. तो हमारा 95th है in 129 countries, and for a country like us, I think it is really something to worry, and also I think a shameful thing that we are so below in this indicator. Denmark is topper with a score of 89.3. Asia Pacific, अगर हम region बात करें तो out of 23 countries we are 16th. So like Gitanjali is saying, the other countries who are much smaller, Sri Lanka and all, are doing much better. ये हमारा एशिया पैसिफिक का एक रैंकिंग है, आप देख सकते हैं. फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया है, लास्ट पाकिस्तान है, और हम लोग कहीं बीच में 16th हैं विद इन द रीजन विद 56.2 स्कोर. तो इसमें हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जैसे एज सहज व्हाट वी ट्राई टू डू, हमने ये काम 2-3 साल पहले से शुरू किया है. लाइक 2015 में जब SDGs आए थे तब से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं. एंड Ranjani was also part of these exercises, that we are trying to look at all the goals from gender equality perspective, from sexual and reproductive health perspective. So ये goals को एक जानना, indicators develop करना, ये काम हम लोग पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं. फिर उसी को लेके हमने स्टेट पे ऐसे कुछ रिपोर्ट्स बनाए हैं which was specifically on SDG 3 and SDG 5, and that's why I was very happy when Sharon said that we are having this webinar on SDG 3 and SDG 5. I found it very relevant to the work we are doing, and I thought maybe we will be able to contribute to what Uttarakhand is already doing. We are also bringing the reports in a local language so that actually हम लोगों का जो ग्रास रूट्स पे काम करने वाले लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सके. और लोकलाइजिंग SDGs इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. जब हमने शुरू किया था अराउंड 2016-17 में, वी रियलाइज दैट SDGs वाज मोर एट द नेशनल लेवल. इवन स्टेट्स पे भी तभी इतना काम शुरू नहीं हुआ था. तो सो वी ट्राई टू ब्रिंग ऑल द SDGs फ्रेमवर्क, क्या है, कौन से गोल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, ऑल दैट नॉलेज टू ग्रास रूट्स ऑल्सो विद द पार्टनर्स हम लोग जिनके साथ काम कर रहे हैं. और ये रिपोर्ट्स के आधार पे हमने स्टेट लेवल पे डायलॉग्स भी ऑर्गेनाइज किए थे. Currently, another interesting way we are looking at these SDGs and जो हमारा progress है, and I think which is very much in line with what Ranjani ji and Gitanjali ji were saying, कि पिछले 10 या 15 साल में जो अलग-अलग इंडिकेटर्स पे प्रोग्रेस हुआ है उसको मैप करके देखना कि ये कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है. आई थिंक रंजनी डिड इट फॉर सेक्स रेशियो एट बर्थ, एंड विच इज शोइंग दैट उत्तराखंड अभी नेगेटिव में है. सो सिमिलर एक्सरसाइज हैज बीन डन, और ये दिखाया गया है कि कितने साल लगेंगे ये गोल अचीव करने में. तो इसमें एक्सेस टू मॉडर्न फैमिली प्लानिंग है, गर्ल्स कंप्लीशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, मिनिस्ट्रियल और सीनियर गवर्नमेंट पोजीशंस हेल्ड बाय वुमेन, लॉज ऑन वर्कप्लेस इक्वालिटी एंड वुमेन्स परसेप्शन ऑफ सेफ्टी, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं. सो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दूंगी क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है. लेकिन अभी जो हमारा एक्सेस टू मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ये जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण इंडिकेटर रहा है. वी आर ऑल अवेयर दैट इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हैव कॉन्ट्रासेप्शन रिलेटेड प्रोग्राम सिंस 1950s. उसके बाद हमारे पास MCH, RCH, अलग अलग प्रोग्राम्स आए. सो कॉन्ट्रासेप्शन वॉज ऑलवेज आवर फोकस. स्टिल इफ वी सी कि हमारा जो अभी प्रोग्रेस रेट है उसमें हमको 2030 तक ये हमारा गोल अचीव नहीं होगा. इट विल नीड एटलीस्ट 2086. नाउ दीज कैलकुलेशंस आर ऑल बिफोर कोविड से, और अभी इसके बाद हम लोग जब भी कभी बात करेंगे, आई थिंक कोविड विल बी मेंशन्ड एवरी टाइम बिकॉज इट हैज चेंज पीपल्स वर्ल्ड्स, मतलब लोगों की दुनिया पूरी बदल गई है. सो फॉर एग्जांपल एक रिसर्च बताता है कि बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडेमिक 24.55 million couples in India
will not have access to contraceptives in 2020. I think we need to do similar exercises. I am giving figures from India, but what I'm trying to say is probably these kind of exercises, this kind of analysis is required at the state level as well, because अभी हमको बहुत ज़्यादा fast paced काम करना पड़ेगा. जिस गति से हम लोग ये indicators targets achieve करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं दुगना तिगना करने की बहुत ज़रूरत है. जैसे contraceptives नहीं है तो unintended pregnancies होंगी, unsafe abortions होंगे, और ये सब हम समझ सकते हैं. So what we are trying to do now कि ये जो इंडेक्स है, ऐसे लग सकता है कि ये तो ग्लोबल लेवल का इंडेक्स है. So इसका हम लोग अपने राज्य के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं. And I think it will be very interesting. As Sahaj, we will be very interested to work with states. We are already doing it with Assam, Punjab, and Gujarat, with the civil society organizations, also with the planning department, SDG cells of these states. But what we would also like to share with you is report cards. हम लोग report cards बना रहे हैं क्योंकि index के लिए कुछ थोड़ा ज़्यादा, if there is some gap in data, probably वो पूरा index नहीं बन सकता है. So we were thinking that maybe ये जो 51 indicators हैं, उसमें से जो state specific हैं, उसको लेके we are developing these report cards. And one of the reasons is कि we have to track the progress of all the SDGs from gender perspective, and not only look at SDG 5 or 2-3 other like education and health. Then second very important thing which I felt, and I think in the first presentation it was mentioned by Dr. Ravindra ji, that SDGs का अगर हम motto देखें तो leave no one behind is very important part of SDGs. But ये जो सब data sources की हमने बात करी अभी तक, they are all big datas and they don't actually tell you about specific vulnerable groups. So I think what we need to also develop methodology कि ये जो vulnerable groups हैं, जो groups पीछे छूट रहे हैं. For example, if you look at maternal mortality, overall the maternal mortality decline हो गई है, but then who are these women who are dying? I think वो जब तक हम लोग focus नहीं करेंगे. So big data is very important, or as a state we need to focus on gathering good quality data at the state level, at the block level, at the district level. At the same time, I think ये जो हमारे vulnerable groups हैं, उनकी जानकारी कैसे इकट्ठा करें, इसकी भी हमको we should try for that. And I think as Sahaj, we will be really happy to share whatever work we are doing in other 3 states. And if Gitanjali ji says specifically, if you are developing this index, I was really happy to learn about all your work. And so it is really great to see at the state level the efforts you are taking. So we will be happy to share whatever information we have and also learn from you. And really thanks a lot for giving this opportunity to share. I am sharing our email ID in case if there are any questions, if you want to get hold of the state reports that we have done or the gender index report. So having said that, I will stop my presentation, and thanks a lot. I just wanted to share that I have stayed, though currently I am in Pune, I have stayed in Uttarkashi for 8 years. So Uttarakhand has a very special place in my heart. So thanks again for giving me opportunity to engage with all of you. And thank you. Thank you. Thank you so much, Dr. Sardesh Pandey, for enlightening us on Sahaj's work and the gender index by equal measures, and also focusing on how important it is that we integrate the SDG 5, gender equality, with in other SDGs as well. So thank you so much. We have crossed our time, but still we are going to continue for another 10-15 minutes. We have 3-4 questions to our panelists. The first question is from Ranjan Kumar Bora, who is an expert at the CPGG. His question is to all the panelists. Please, if any one of you would like to comment on it, welcome. How the data is to be maintained at local level, and what's the tools and framework to be followed as per minimum standards. I would also share the other 3-4 questions so that we can do the answers together. There's another question by Mr. Vijay Potukuchi, who is the chairman of Verdentum Technologies. And he is asking how technology is being used in implementing MNE for projects by government and different UN agencies. This is also a question to all the panelists, and if any one of you would like to answer. We have another question by Sandeep Pandey ji,
who is asking, this is specifically to the panelist on SDG 5. He is asking, how can we rejig the governance structure to make it more responsible to the needs of the marginalized and vulnerable, especially women, in context of SDG 5? And we have 2 questions specifically to Dr. Ravender Singh ji. This is from DSTO Nainital. So Dr. Singh, he is asking you, do we get private hospital and clinics health data? And can we get health data of medical companies like Cadila, Glenmark generated during new drug development? So over to you, panelists. Any one of you would like to start with the answers? Hello. Yes, Dr. Singh. Yeah, I can answer. Yes, sir. A few questions has come. Basically, one question is regarding that it is stated that lot of data is available in health sector, especially even for the grassroots level. But I differ. Actually, their data is available, but good quality data is not there. Researchers are always asking that type of data they may be asking, especially disease-specific data is not available. And data from private sector is at all not available. It is available only for specified diseases only. But yes, districts can ask for certain other information about the patient and type of diseases. Different data sets can be there. They can voluntarily provide information. I think that we can able to try. In certain places, actually, private sectors are giving certain information to the chief medical officers of the districts, and they compile together public sector and private sector information regarding various incidents of diseases, including how many people have been admitted in their IPD position, and also deliveries, how many children birth and other things. So that type of cooperation is needed from private sector by the health department. But regarding the analysis of the data, many researchers have been talking that data quality is not good, and that's why the research is not being there. But nevertheless, I will actually suggest that a health department can have a center for policy research analysis of health policy analysis center or wing, where this type of information they themselves can do, or the universities can have health policy analysis centers in them that can be sponsored by the government, and they can do exclusive or exclusive research and specific research in the health side. That can be useful for policy making also. Another question actually came to me regarding that drugs and other things. Yes, drug production and other thing information is being provided to the Department of Pharmaceuticals in the Government of India, and each drug agencies are also to be registered with the drug controller of the states as well as the Government of India. Regarding the new drugs, when they are doing clinical trials and other, at that time they need to have a permission with the Drug Controller General of India, and they provide certain information. But this information is cannot be made available to public because it is a very specific and commercial information which cannot be shared. So this is actually there. Second, actually about that IT use, we have actually improved a lot of technology in our health sector, especially transmitting of a lot of information. Online information is being available and real-time basis. But yes, nevertheless, there is a lot of improvement is needed here, and we can able to generate real-time information from hospitals. At least every day they can able to provide the information to the concerned authorities. Besides that, we can have a GI system where we can have a mapping of the health facilities with the type of beneficiaries, and that can be possible. So there is a lot of improvement is required in the IT sector, use of IT sector in the health sector. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Dr. Singh. Ranjani, can you please
take this question on how can we rejig the governance structure to make it more responsive to the needs of the marginalized, especially women in context of SDG 5? Yeah. I just feel that first, powers have to be devolved to PRIs. It is not done uniformly in all states. And the Kerala model, where they've done planning for marginalized, including single women, scheduled caste, scheduled tribe, and allocating budget is a good way. And, one thing is, women in does not mean that they are going to be gender sensitive or automatically responsive to the marginalized. So it is very important for these existing self-help groups to be federated and make the demands. And some have organized Dalit federations which make demands, or Adivasi federation. And it will be good actually if women from the federation stand for elections at district level and higher level, rather than, because they've come from the bottom, they know the needs a bit, they will be held a bit more accountable. So I want to just reiterate that not every woman is automatically going to be sensitive to either gender, caste, or whatever issues. So we need accountability from below through the federation structures of marginalized, putting pressure on these women and them moving up. And we do have SC, ST, and minority and single women data in NFHS, for example. Such data needs to be used for monitoring, not only whether the state is progressing or district is progressing, but also whether these kind of various social groups are, and wealth indexes there are progressing to the same extent. Thank you, Ranjani. Hello. I'm sorry we won't be able to take any more questions because we are well beyond our scheduled time for this webinar. Thank you, Ranjani, and thank you, Dr. Singh, for answering the questions. And thank you, participants, for posing these questions. I would like to now invite Dr. Dinesh Badoni, the Deputy Director of DES, to please give the vote of thanks. Hello, Dr. Badoni. Hello. Hello, Dr. Badoni. Have you unmuted him? Because we are not able to unmute sometimes. No, I unmuted him, yes. I unmuted him long back. हेलो जी, yes sir. मैम, थैंक यू जय। मैं सबसे पहले 14वें सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सर एक मिनट सर, सॉरी, आप हेलो। जी जी मैम, वो एक्चुअली आपका शायद 2 सिस्टम चल रहे हैं इसलिए आवाज गूंज रही थी। बंद कर दिया। जी सर, प्लीज कंटिन्यू सर, सॉरी। थैंक यू जटा मैम। 14th सांख्यिकी दिवस के अवसर पर प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को याद करते हुए और उनके सांख्यिकी में दिए गए योगदान को याद करते हुए आज जो वेबिनार आयोजित किया गया SDG 3 और SDG 5 पर, मैं सर्वप्रथम अपर सचिव महोदय कार्तिक संख्या परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं
कि उन्होंने इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद हमें समय दिया और हमारा मनोबल बढ़ाया। इसी के साथ मैं अर्थम संख्या निदेशक का भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उनके निर्देशन में उक्त वेबिनार का आयोजन किया गया। मैं इस कार्यक्रम के संरचना, विचार एवं क्रियान्वयन हेतु डॉक्टर मनोज कुमार पंत, एसीओ सीपीजीजी और संयुक्त निदेशक अर्थम संख्या का भी कोटि कोटि हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं अर्थम संख्या परिवार की ओर से अपने सहयोगी संस्था EHI एवं आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर रविंद्र सिंह, सीनियर एडवाइजर EHI, डॉक्टर मुनीष सिंह, सीनियर पब्लिक हेल्थ एडवाइजर EHI, मैम रंजनी मूर्ति, रिसर्चर एंड कंसल्टेंट, डॉक्टर नीलांगी सदेश पांडे, सीनियर प्रोजेक्ट एंकर सहज, तथा श्रीमती गीतांजलि शर्मा, उप निदेशक 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का भी हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि आज की परिस्थिति को देखते हुए जो सर्वाधिक ज्वलंत मुद्दे हैं, लैंगिक समानता और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर उन्होंने उपयोगी जानकारी हमारे प्रतिभागियों को उपलब्ध कराई। मैं अंत में इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मैम शरण जैकब, डॉक्टर उप निदेशक GS पांडे, CPGG के समस्त विशेषज्ञ, अर्थ एवं संख्या विभाग के समस्त अधिकारी, कार्मिक के साथ ही जनपद, मंडल, निदेशालय और विभिन्न क्षेत्रों के जो हमारे प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग किया है, उनका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। Thank you so much, Bodoni sir. Thank you everybody for all your active participation, and thank you all the speakers for sharing all your thoughts and recommendations. Thank you. See you all. Bye. Yeah.